बजट टॉक 2022 आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, क्या अमृतकाल गोल्स जो गवर्नमेंट ने रखे हैं वो अचीव हो सकेंगे? 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस को हो गए हैं और इस बजट में अगले 25 साल का रोड मैप तैयार किया गया है। उसके ऊपर व्यूज, क्या अनएम्प्लॉयमेंट जॉब प्रॉब्लम को इस बजट में एड्रेस किया गया है? ये एक और क्वेश्चन है। क्या फार्मर्स के इश्यूज को इस बजट में कैटर किया गया है? क्या इजी टू बिजनेस की तरफ हम एक और आगे कदम बढ़ाया है या हमने एक कदम पीछे लिया है? क्योंकि इजी टू डू बिजनेस एक हमारा प्राइम गोल था। क्या एजुकेशन पावर के लिए हम वर्ल्ड में एक इंडिया का नाम होगा, जिस तरह हम डिजिटल एजुकेशन पे इस बजट में फोकस किया गया है? क्या हम डायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाइड करने को भूल गए हैं? क्या हम पुराने कॉम्प्लिकेशंस पे फिर आ गए हैं? क्या हम क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? क्या इस बजट में एमएसएमई की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है रिगार्डिंग देयर वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा? क्या हमने जीएसटी को और डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं किया? इस पे एक हमारी डिस्कशंस। क्या सैलरी क्लॉज, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कल मेंशन किया था कि 1.40 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, तो क्या हमने सैलरी क्लास और मिडिल क्लास के साथ जस्टिफिकेशन किया है इस बजट में? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन मिडिल क्लास पे बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब को जानने के लिए हमारे थिंक टैंक्स, हमारे टैक्स शार्क्स, डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, अवर चीफ पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, डॉक्टर रवि गुप्ता जी, प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, अमरजीत चोपड़ा जी, सीए फॉर्मर प्रेसिडेंट आईसीएआई, सीए अतुल गुप्ता जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट आईसीएआई, सीए संजय अग्रवाल जी, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, सीए संजीव सिंघल जी, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, सीए अशोक बत्रा जी, जीएसटी एक्सपर्ट, सीए अविनाश जी, एनआईआरसी चेयरमैन। तो ये जो थिंक टैंक्स हैं बजट टॉक के, हमारी टैक्स लॉ एजुकेयर सोसाइटी, और हमारी टैक्स लॉ एजुकेयर सोसाइटी बड़ी खुशकिस्मत है कि हमारे पास ये थिंक टैंक्स हैं। अब मैं इनवाइट करता हूं हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि गुप्ता जी, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इस टैक्स और ब्रेन बिहाइंड दिस सोसाइटी, आपसे एड्रेस करेंगे। थैंक यू रणजीत। Patrons of the society, office bearers, members, participants, invitees, a very good morning to all of you and welcome to this 17th budget talk organized by the Tax Law Educator Society. Friends, over the years we have grown in stature, and today's seminar, today's program that we are holding today, we are pleased that we are in association with a large number of organizations, very prestigious organizations. We are in association today with the All India Federation of Tax Practitioners, with the Sales Tax Bar Association Delhi, the Delhi Tax Bar Association, Association of Chartered Accountants represented by Mr. Jindal, Ashwini Jindal ji, Voice of CA under the chairmanship of Sanjay Agrawal ji, Tax Research Foundation under the chairmanship of Avinash Gupta ji, chairman of NRIC, Global Entrepreneurs and Professional Association. We are pleased that all these associations have agreed to join the program today, and they are being represented by the presidents and the chairmen of these respective associations. The budget 2022 was presented yesterday by the finance minister. It was primarily to lay the foundation and to
carve the way forward of what was referred to as the Amrit Kal. The Amrit Kal, Finance Minister said, is the step from India at 75 to India at 100 years. So whatever is required in the next 25 years for the growth, development of the economy, I think this budget is aimed at starting those initiatives. The Finance Minister yesterday talked about certain new concepts. There was a talk about the RBI going to issue digital currency. This will be the new concept in India, and I think in the coming years, we will see this concept coming into the light of the day. She also mentioned about issuing green bonds for sustainability, for sustainable growth of the economy. So these concepts were introduced for the first time, and I'm sure that with our panel of experts today, we'll be able to understand these concepts. Direct taxes have seen a sea change in the provisions. We have very complicated provisions. We have provisions for filing of updated returns, taxation of virtual digital assets. Then you will find a lot of provisions to correct the drafting errors which were made in the preceding years. For example, the sections for 148, 148A introduced last year only. You'll find a lot of provisions for avoidance of litigation and also for prevention of tax evasion. These are very complicated provisions which have been inserted this year, and we are very fortunate that Dr. Girish Ahuja Ji, who has the capacity to listen to the budget yesterday, to grasp the budget at night, to learn it in the morning, and present it before you at 10 o'clock today. It is only his ability that will help us today in understanding this. Friends, there will be a slight change in the schedule of program today. Because of certain family emergencies, Dr. Girish Ahuja may have to leave a little early. So my request to all the participants to keep their presentation very short and within the allocated time to kindly complete their deliberations. I'll request Dr. Girish Ahuja Ji to start at about 10:20. In the meanwhile, I will first request Ashwani Jindal Ji to give his remark and introduce also Dr. Girish Ahuja. Introduce Okay. So he says that he will start a little later. So in the meanwhile, we have with us Mr. D.K. Gandhi, who is the National President of All India Federation of Tax Practitioners. May I request him to give a brief welcome address. Mr. D.K. Gandhi, please. Do we have Mr. Gandhi with us? Okay, then I'll request Mr. CA H.L. Madan Ji, who is the President of the Sales Tax Bar Association, to make his opening remarks. Honorable Dr. Girish Ahuja Ji, respected Dr. Ravi Gupta Sir, respected Arun Ahuja Ji, Secretary General, respected D.K. Gandhi in his absence, Ashok Batra Ji, Amarjit Chopra Ji, Atul Gupta Ji, Naveen Ratan Ji, MP Pathak Ji, Sanjay Agarwal Ji, Ashwin Jindal Ji, Sanjay Sharma Ji, Ranjish Sharma Ji, Avinash Gupta Ji. I'm just naming them, not speaking about their designations, because there is a shortage of time. Dr. Ravi Gupta says, please be brief. My office bearers, Madam Nitika Khanna, Suresh Agarwal, Narendra Sharma Ji, respected seniors from all associations participating in this webinar, dear professional brothers and sisters, and ladies and gentlemen, very good morning to all, and a warm welcome to all the participants on behalf of AIFTP North Zone, because I'm chairman of AIFTP North Zone and Sales Tax Bar Association as president. Friends, all of us are very fortunate that we had this opportunity to listen
on the first day and first budget talk. फ्रेंड्स, आप सबको पता है, सारे लोग कहते हैं मैं इस पिक्चर को पहले ही दिन पहले ही शो में देख के आया हूं, तो वही हमारे साथ है. ऑल ऑफ अस आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैड this opportunity to listen on the first day and first budget talk by Dr. Girish Ahuja. He is 21st century Palkiwala. He is an ocean of knowledge, an institution in himself, a person who remembers everything verbally with commas and full stop. And not even that, even the old, but the new one also, he insert the new one into the provisions with comma and full stop, and he explains to the members in such a way so that throughout the year they can practice this without any difficulty. And he will analyze the budget critically to evidence knowledge or to educate all of us participants. Same through the year. Hats off to you, sir. Also welcome the other speaker, Shri Ashok Batra Ji, who is a GST expert and author on service tax and GST books, etc. Other speakers as well, Mr. Amarjit Chopra and the other learned speakers. Mr. Avinash Gupta is also there. So I welcome all of them on behalf of the both the associations and all the participants and all the participants from other associations also, whose names have been taken by Dr. Ravi Gupta. Friends, I am extremely grateful to Ahuja sir for giving me this opportunity to welcome so many great dignitaries on their virtual platform. I wish a very good health and long life to all the experts so that we can have benefit of listening them in future as well on the first day and in the first budget program. On GST, there are not much changes, but all the whatever changes are there, 10, 20, 12 or 15, they will be explained by our learned speakers. So I'm not discussing about that. Friends, Ahuja sir, thank you very much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Thank you, Mr. Madan. Friends, we have with us here Amarjit Chopra Ji, the past president of the Institute of Chartered Accountants of India, a prolific speaker, and he has been analyzing the effect of the budget on the economy, on the banking sector, on the infrastructure, etc. I'll request Amarjit Ji to kindly throw the light of the impact of the budget on the economy. Sir, we are constrained with time. As I said in the beginning, I'm really sorry that I'll have to keep the budget a little tight schedule. So request you to briefly update the members, the participants about the impact of the budget. Thank you. Thank you, Raviji. And of course, thanks to Dr. Girish Ahuja, the guru, the text guru, Arun Ahuja Ji, and Atul Gupta Ji, Sanjay Agarwal Ji, and members of the all other associations, H.L. Madan Ji, for that matter. And I think I'm really thankful to the organizers for providing me this opportunity to share some of my thoughts on this budget. Arun Ahuja Ji set the tone right when he actually came out with the various objectives which were actually expected of this budget to achieve. I will only say that when I saw the economic survey on 31st of January, at that time I posted on my Facebook that if I'm not wrong, and if in that particular case, the economic survey very clearly reveals that the budget will not be too taxing, but at the same time, it may not enthuse the middle class too much and under any circumstances. And earlier also in one of my discussions, I had said that the government does have too many resources to part with so far as the middle class is concerned. But as they say, ये दिल मांगे मोर, ये दिल है कि मांगता नहीं. हम expect तो करते ही हैं कि भाई कुछ ना कुछ सरकार से मिलना चाहिए middle class को. We were expecting, rather hoping against the hope कि शायद standard deduction बढ़ जाए, medical में कुछ किसी तरीके का ऊपर नीचे हो और उसमें कोई benefit मिल जाए middle class को. But it was not to happen. It happened in a speech which was 43% short compared to her last speech, basically in the last year.
एक चीज जो बहुत अच्छी लगी मुझे, and I would like to say this, that there are going to be elections in the 5 states, and the government could have been tempted to come up with some of the very populist measures, which the government has not done. And I think the entire budget has actually focused itself on the developmental side. अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर देखूं तो पिछले साल की तुलना में 35.4% बढ़ा हुआ है, 5.5 लाख करोड़ से उठ के 7.5 लाख करोड़ की बात हो रही है. I think it is absolutely fantastic. And if I look at the technology side of it, look, today we are talking of Kisan drones. Kisan drones का मतलब ये है कि हम आप कल्टीवेशन की मैपिंग कर सकते हैं, क्रॉप की मैपिंग कर सकते हैं, मैन्योर की मैपिंग कर सकते हैं, आप फर्टिलाइजर्स की मैपिंग कर सकते हैं, आप सीडिंग की मैपिंग कर सकते हैं. All these measures are again taking us back to the technology part basically. तो ये जो कुछ अच्छे हिस्से हैं इस पर्टिकुलर बजट के, that we should not be forgetting under any circumstances, and the kind of capital expenditure which is, or the kind of expenditure which is being incurred on the national highways. It is said that in the next 1 year 25,000 किलोमीटर नया national highways के अंदर addition होगा, which is absolutely phenomenal, and I think if we keep up with that pace, क्योंकि अगर national highways को आप कर रहे हैं तो you are speeding up the entire process of your delivery mechanism for that particular matter, and also at the same time saving on the fuel costs, etc. It's going to be a wonderful thing. And also at the same time, अगर आप national highways बना रहे हैं, it means you are providing lot of employment, lot of steel consumption, lot of cement consumption, lot of other consumptions, and it is going to have a very, very positive impact so far as that particular part is concerned. One station, one product concept. I think this is something which we talked of last year, if I am not mistaken. तो हम ये कह रहे थे भी अगर आप बनारस में हैं तो बनारस की साड़ियां, बनारस की सिल्क, उसको प्रमोट करिए. अगर आप जयपुर में हैं तो जयपुर के हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करिए. I think this is the concept which they have brought in. It will not be technology based, it will be more of labor intensive based basically, which is going to be there. So this will create employment and this will create lot of scope for the exports. जो आपकी इमरजेंसी लैंडिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम थी उसको आपने एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो सबसे ज्यादा सफर किया उसमें आपने 50,000 करोड़ का एडिशन किया है, which is going to be again a wonderful thing to happen. 1500 करोड़ रुपया आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग रख दिया है, और जो आपका फिस्कल डेफिसिट है ये सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ 6.9% जीडीपी का है, which is well within the control. I would like to say so far as that particular part is concerned. Direct taxes and indirect taxes collections have been very heavy. Ashok Ahuja Ji ने कहा कि पिछले महीने की collection GST की 1.4 lakh crores है. There is no doubt, and that is why this fiscal deficit has been retained at 6.9%. Otherwise, it would have been something different. MAT on cooperative societies has been reduced from 18% to 15% to bring it at par with the companies' bills. और अगर मैं ये समझूं कि टैक्स अवेजन के जो कुछ प्रोविजंस थे या कुछ लूप होल्स थे, चाहे आप सेट ऑफ के प्रोविजंस की बात करें कि अगर आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो आप उसको बाकी इनकम्स के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे. सेट्स और सरचार्ज जो लोग मिसयूज कर रहे थे क्लेमिंग इट एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, वो अब आप नहीं कर पाएंगे. Parity between the central government employees and state government employees has been brought in with regard to the employer's contribution to the NPS National Pension Scheme, or tax incentives for the manufacturing and the startups has been extended by a period of 1 year. I think this is all going to be wonderful experience. So for जो डिजिटल करेंसी की बात की अरुण आहूजा जी ने और रवि जी ने भी कि डिजिटल करेंसी आरबीआई इंट्रोड्यूस करेगा, पर डायकोटोमी सिर्फ इतनी है, एक तरफ आप डिजिटल करेंसी ला रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो बाकी वर्चुअल जो जितनी बाकी करेंसीज हैं उनको हम वर्चुअल एसेट्स मानेंगे और उन पे 30% का टैक्स लगाएंगे. आई थिंक टू एन एक्सटेंट इट मे बी राइट, बट एट द सेम टाइम इट कुड बी वेरी हार्श ऑन सम ऑफ द टैक्स पेयर्स. But I personally feel to an extent I will fully like to go with you, and this budget again tries to reduce the litigation. बड़ा क्लियरली ये कहा गया कि भी अगर किसी पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर किसी एसएससी की अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू फाइल द अपील इन दोस केसेस.
so far as that particular part is concerned. Updation of returns की बात की गई है. सिर्फ मैं डॉक्टर आहूजा से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी लिमिटेशंस उस सेक्शन में दी गई हैं कि क्या वो सेक्शन वाकई में यूजफुल रहेगा इन द टाइम्स टू कम? क्या आप इन सर्कमस्टांसेस में अपडेट नहीं कर पाएंगे जितनी लिमिटेशंस उसमें हैं, उसमें वेदर दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल बी दैट मच यूजफुल? और दूसरी बात मैं जो जानना चाहूंगा कि इज इट नॉट इनइक्विटेबल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि आप ये कहें कि अगर तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, परंतु अगर आपका रिफंड बढ़ रहा है, आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं, आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो रही है, तब आप उसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते. Is it equitable? Normally the things are not equitable. Let's be very clear about it. But will it be equitable that government really does it and comes across with that kind of a situation? और जो एक और बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो जीएसटी वगैरह में, कस्टम ड्यूटीज में, पर्टिकुलरली कस्टम ड्यूटीज में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें मोबाइल भी चीपर होंगे. आई थिंक वी कैन वेट फॉर द मोबाइल्स टू बिकम चीपर. द चार्जेस आर गोइंग टू बिकम cheaper. For that matter, the big TVs are going to become cheaper. Cut and polished diamonds are going to become cheaper. So as everyone, I can request that probably your wives will be feeling happy कि भाई ये सब चीजें सस्ती होने वाली हैं. But at the same time, एक गरीब का छाता जो है वो शायद महंगा होने वाला है. ये भी एक डाइकोटोमी है जहां तक इस बजट का सवाल है. और जीएसटी रजीम में जो आईटीसी का यूज है, जो आईटीसी का आप availment है, that is going to become little bit more stricter basically. कोई भी बजट जिसमें मैं ये समझता हूँ कि 20% तो सिर्फ इंटरेस्ट का ही जा रहा इस पर्टिकुलर बजट के अंदर, और 5% पेंशन का जा रहा है, 16% जो जा रहा है वो स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज का जा रहा है. कीपिंग दैट इन व्यू and looking at that corporate tax, this is again one issue which I would like to hear from the various tax experts. Corporate tax contributes lesser than the other income tax which is being contributed by the individuals or the firms for that matter. I think the corporate tax is contributing 13% and the other income tax is contributing 14% for that matter. Will it be justified or is it justified or is it not justified? I leave it to the judgment of the various tax experts. But keeping in view all other factors which the economy is going through, particularly the impact of the COVID in the last 2 years, I personally feel the FM has done a fabulous job of balancing the needs of this particular economy. And I will like to say that this budget is a developmental budget. It will appear to be a very boring budget from the viewpoint of a person on the street. जो एक आदमी स्ट्रीट के ऊपर है उसके लिए तो ये बड़ा बोरिंग सा बजट है. परंतु अगर मैं एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन एनालिस्ट इस बजट को पढ़ता हूं तो मुझे ये लगता है कि ये बजट शायद हिंदुस्तानियों को बहुत इंफ्यूज करेगा इन द इयर्स टू कम. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you very much for an in-depth analysis. And within the short time that we could give to you, you have very intelligently, very expertly, you have analyzed the budget and its impact. Thank you so much, sir. Sir, we also have with us CA Atul Gupta Ji, who is also the past president of the institute, and we'll like to have his brief comments on the budget. Atul Gupta Ji. सर नमस्कार सर. चोपड़ा सर को नमस्कार, आहूजा सर को नमस्कार, रवि गुप्ता जी को, अरुण आहूजा जी को, सभी को. सर संजीव भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आहूजा सर को सुने, क्योंकि आई कैन सी ऑन द चैट बॉक्स आल्सो एवरीबॉडी इज ईगरली वेटिंग फॉर द आहूजा सर. तो मेरे हिसाब से सर मैं सभी को बस नमस्कार, धन्यवाद सर आपका बुलाने के लिए, और कभी दूसरे मौके पे या इवन बाद में देख लेंगे सर, पर पहले आहूजा सर को रिक्वेस्ट कर लेते हैं सर. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, Atul Gupta Ji. Thank you for understanding our position today and our constraint of time. Thank you so much. It is a real pleasure that you joined the program at very short notice and you are always with us. Thank you so much. Friends, we also have with us Mr. MP Pathak, who is the president of Delhi Tax Bar Association. Brief comments from Mr. MP Pathak, please. बहुत बहुत धन्यवाद सर. हमारे गुरु जी आदरणीय आहूजा साहब, गांधी साहब, अतुल गुप्ता जी, अमरजीत चोपड़ा जी, अशोक बत्रा जी,
गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दिया। और बाकी हम सब सुनने के लिए, जो आहूजा साहब को 1 फरवरी को बजट आते ही हम इंतजार में लग जाते हैं कि साहब को कब सुनने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैं भी अतुल गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ कि अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे हम आहूजा साहब को ही सुनने का प्रयास करेंगे। और टैक्स एडुकेशन सोसाइटी जो हमें टाइम टाइम पे अपडेट करती रहती है, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और मेरा निवेदन यही है कि अब आहूजा साहब जो है अपना, आज हम लोगों को अपना जो है ज्ञान देने के लिए अपनी ज्ञान गंगा प्रवाहित करें, जिसमें हम लोग स्नान करने के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, Pathak Sahab. And I'll now request Mr. Ashwini Jindal ji to please come in. Mr. Ashwini Jindal ji. थैंक यू वेरी मच सर। ये हमारा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी सबको बोला कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमने एंट्री कर ली है जो गुरुजी की पैटर्न में सोसाइटी है, टैक्स एडुकेयर सोसाइटी। आई एम थैंकफुल टू रवि गुप्ता जी एज वेल एज अरुण आहूजा जी, जिनके कारण हम भी आज फर्स्ट प्रोग्राम में, जैसे मैंने कमिट किया था, 1000 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वोका टीवी के माध्यम से, सी एसोसिएशन के माध्यम से, टैक्स एडुकेयर के माध्यम से, और भी एसोसिएशन इतनी उनके माध्यम से मैं सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ हमारे गुरुजी को जैसे निर्मला सीतारमण जी को पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं ना कैबिनेट में, मैंने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया था कैबिनेट में बिफोर द बजट। तो गुरुजी को जैसे रवि जी ने शुरू में बताया कि मेडिकल इमरजेंसी इनके ब्रदर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो गुरुजी का आज थोड़ा मतलब इसीलिए गुरुजी को इसीलिए हम मतलब बाकी प्रोग्राम थोड़ा शॉर्ट और मतलब क्रिस्प कर रहे हैं। मैं जितने भी जुड़े हुए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबका स्वागत करता हूं। अभी मेरे साथ अविनाश गुप्ता जी हमारे चेयरमैन NIRC भी जुड़े हुए हैं, मनीष जी भी गुरुजी के पार्टनर, और अरुण जी का बेटा भी जुड़ा हुआ है, और भी हमारे साथ स्पीकर्स जुड़े हुए हैं। बाकी सबका जो आदरणीय पास्ट प्रेसिडेंट्स अमरजीत चोपड़ा जी, अतुल जी, और भी बड़े पैनलिस्ट हैं, क्योंकि गुरुजी के बीच में मैं ज्यादा नहीं रुकना चाहूंगा। गुरुजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को बोला गया, गुरुजी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इन अब्सेंशिया संजय अग्रवाल जी अब मेरे ख्याल में आ भी गए हैं, संजय अग्रवाल जी, क्योंकि हम ज्वाइंटली प्रोग्राम कर रहे हैं जो टैक्स एडुकेयर सोसाइटी की तरफ से, इस वजह से मैनेज भी ज्वाइंटली कर रहे हैं। गुरुजी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। मेरा तो उस समय जन्म नहीं हुआ था, मैं 72 में जन्म हुआ मेरा, तो गुरुजी तो 71 में शायद 69 में तो CA बन गए थे। तो आज की डेट में इनकी पहचान अकेले टैक्स गुरु के रूप में नहीं, इंटरनेशनल टैक्स गुरु हो चाहे योग गुरु हो, सबके रूप में हम गुरुजी को देखते हैं। तो नंबर ऑफ लेक्चर की तो बात करने की जरूरत नहीं। कभी हम कहते थे गुरुजी के 3000 लेक्चर हो गए, अब तो हमें ढूंढना पड़ता है कि 5000 हो गए, कि 8000 हो गए, कि 10,000 हो गए। तो भारत की जनसंख्या की तरह इनके लेक्चर बढ़ रहे हैं। तो इन सबसे ऊपर हटके आज हम गुरुजी से सुनने चाहेंगे कि जे अपनी प्रिया जो मोदी सरकार है उसके बारे में हमें कितना बताते हैं बजट में। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा डायरेक्टली टू गुरुजी। Before I request Dr. Ahuja to start his deliberations, I would like to place on record appreciation for Shivam Ahuja, who is son of Arun Ji, for all the technical support that he's providing for today's program. And for the last 3 days, he has been tirelessly working for the organizing this program today. And it is because of his efforts that we are having this technical program today. Thank you, Shivam. And now over to you, sir, for your deliberation. Good morning to everyone. My apology for cutting short the time of the others, but there is some medical emergency. He should not have said what is the details of that emergency. Okay. Our past president, Mr. Amarjit Chopra Ji, IPP immediate past president, Shri Atul Gupta Ji, President of the Tax Educare Society, Dr. Ravi Gupta Ji, General Secretary, of course, CA Arun Ahuja Ji, Chairman of the Northern India Regional Council, Avinash of the Institute of Chartered Accountant of India, Avinash Gupta Ji, HL Madan Ji, the Tax Bar Association of Delhi, Sale Tax Bar Association of Delhi, MP Pathak Ji, Delhi Tax Bar Association, and above all, अभी नहीं, मेरे अपने पार्टनर्स बैठे हैं, मैं भूल गया उनका, मनीष गर्ग जी,
मनीष गर्ग जी, गौरव डकेचा जी। अभी मैंने एक थोड़ा सा हमसे गलती हो चुकी है कि हमने संजीव सिंघल जी को टाइम नहीं दिया, क्योंकि आई वाज इन ए हरी। तो संजीव सिंघल जी also is there, the Central Council member, and of course the other dignitaries, Sanjay Sharma ji, of course, Advocate Sanjay Sharma ji is also there. मुझे नहीं पता DK गांधी जी आ गए नहीं आए, और DK गांधी जी in absentia if he is not there. Ladies and gentlemen, please come. Yes. Sorry, sir. DK Gandhi ji also, we welcome it, the president of the All India Tax Federation of Tax Practitioners. So, may I also intervene, please? Sanjeev Singhal Ji, please stay with us. We will like to listen to you on your topic of sustainable growth, but we will do that as soon as we are done with the lecture of Dr. Girish Ahuja Ji. His deliberations are over. We will like to listen to you. So, Sanjeev Ji, please stay with us. I've been told that Sanjay Agarwal ji is also there, a newly elected Central Council member. Ladies and gentlemen, well, I don't know whether I'll be able to perform the way I used to perform, but I'm trying my level best to come up to that level. So first thing is, there was an amendment which was made in the definition of slum sale, which is given under section 2 clause 42C. The amendment which was made was because of the reason, they say what is slum sale means, transfer of one or more undertaking. Earlier the word used was as a result of sale. They used it, no, not as a result of sale, by any means by which the assets are transferred for a lump sum consideration without assigning the value to any asset or liability. The mistake which they committed was assets and liability is respect of that sale. Now that word sale should not have been there when you have used the word by any means. So the word sale has been substituted by the word transfer. I'm going section by section, of course. Next section, a new subsection inserted under section 2, that is called section 2 clause 47A, which is virtual digital asset. The concept of virtual digital asset may not be known to me in detail, but of course everybody talks about cryptocurrency, but this is nothing but, there's not only cryptocurrency, it is many things. So the definition given in section 2 clause 47A is very well. Cryptocurrency means any information, any token, any information, any code, any token, any what you call number which has been generated by crypto means, which has been done by, I'm not very technical in that word, crypto means, crypto means which has been generated. That is also called as cryptocurrency. So it is not only currency, but does not include Indian currency or any foreign currency. But this has been generated. That is mining is done. Generated, the asset may be of any kind. It can be a token, it can be a code, it can be information, it can be what you call any number which has been generated. And you have one more word is very called fungible. Fungible token also is also the word which is used in that. So I don't know that technical things in 247A, you please read that. But that, of course, is the definition given. Now, this is an income. How do you get this? How do you tax it? They have inserted section 115 BBH. They have inserted section 194S. They have inserted section 56 of section 2. Some amendment has been made in section 56 to 10, all because of virtual digital asset. The meaning is given under section 2 clause 47A, but I am coming to 115 BBH, which has been introduced with effect from assessment year 23-24 as the 2023-24, which says where the total income of an assessee includes any income from the transfer of any virtual digital asset. Are you understanding me? Your total income includes income from the transfer of any virtual digital asset. Then such income shall be taxable at the special rate of 30% under section 115 BBH. And the clause B says, and all other total income will be taxable at its at normal or special rate
given under other sections. But what I'm trying to explain, they have said now profit or gain from cryptocurrency is going to be taxed under special provisions of 115 BPH. Somebody was asking, under which head you will take the profit on the sale of cryptocurrency? Will it be taken under capital gain? Answer is no. If they had taken it under capital gain, they should have amended the definition of capital asset under section 2 clause 14. They have not done. And if they had taken it as a capital gain, then they would have talked about short-term capital gain or a long-term capital gain. Then nothing has been talked. It is not a capital gain. It is not a salary. It is not house property. It cannot be called a business income. They have treated it under the head income from other sources. If there is no, it doesn't fall under first 4 heads, it will fall under the residuary head. So that under residuary head, whatever is the income from the cryptocurrency is going to be taxed at the rate of 30%. But they have added that. Please note, no deduction, no expense, except what you call cost of acquisition of that virtual crypto asset. No setup or no allowance will be allowed from such crypto income from which is earned on account of virtual crypto asset. So you will not be allowed any expense except expense on the cost of acquisition of that virtual digital asset. You will not be allowed any loss. You will not be allowed what you call setup under any provisions of the Income Tax Act. And secondly, no loss is allowed to be set up from any other provision. This loss is not allowed to be set up any other provisions of the Income Tax Act. You will not be allowed to set up this loss at all. And no loss of any other provision can be set up on this crypto income. So crypto income without setup will be taxable. Now, one issue which is very important. Yesterday, I was discussing with somebody said, suppose there are 2 transactions of virtual crypto asset. One transaction, you have income, another transfer, you have a loss. Will that be allowed to be set up? According to me, that is one of these 2 transactions. You have to calculate the income from virtual crypto asset. So it is not to be calculated transaction wise. It has to be calculated the total income, which is included in the total income. So my point is, yes, one loss, another loss, a profit under the crypto virtual digital will be allowed to be set up, but no other loss, or you can't set up any loss under any other provision of the income tax from this crypto income, or this loss cannot be set up. And thirdly, this loss will not be allowed to be carried forward. If there is a loss on account of virtual crypto asset sale, the loss will not be allowed to be set up at all. That will be a dead loss in that case. You can't be carried forward, and you will not be allowed to set it off also. This is 115 BBH. Now the point is, this is a transfer. And when there is a transfer, how do the income tax will know there is a transfer of the cryptocurrency? So to monitor that, they have brought a section under the provisions of TDS, like section called 194S, which said every person responsible for making a payment of consideration for the transfer of virtual digital asset shall be under an obligation to deduct tax at the time of credit of such consideration to the party, or at the time of payment of such consideration, whichever is earlier, and the tax has to be deducted at the rate of 1% of such consideration. It's 1% of the consideration, not 1% of the income. 1% of the consideration tax will have to be deducted in that case. The tax will be deducted at 1% of the income. That was the point. Now, sometimes what happens is that you are getting a consideration in kind, or you may be getting a consideration in the exchange of another crypto asset, or there may be an income partly given, the income is done partly in kind and partly in cash. So what will happen about the TDS in that case? The law says you will have to, if it is only in kind, you will have to see that tax has been deducted, like lottery income. Suppose a car, you win in a car in the lottery income. You have to ensure the tax has been deducted on account, or you have to collect the tax from that person who's winning that lottery, or similarly who's winning that, you will have to collect that person because it is in kind. And when partly in cash and partly in kind, then if the TDS amount is more than what is cash,
then also you will have to ensure that the TDS has been deducted and deposited in that. Then they have said provision of 203A and 206C, 26AB shall not be applicable. What is that 203A? That there is no requirement of TAN. For depositing this TAN, there is no requirement of TAN. And secondly, 206AB, they say that there is no need to deduct the tax, twice the rate, whatever is there. If we have not filed, that also section is not applicable in that case. That section is also not applicable in that case. So one has to be very clear. The next point they have said is that when you are, it's okay. So my point which I wanted to say is, another point is when you are deducting this tax, it might have been credited to any suspense account or any other account, whatever name called, it does not make any difference. You will have to deduct the tax at the rate of 1%. At the rate of 1%. And the point is that there is no need to, no tax to be deducted if the payment made by a specified person does not exceed 50% during the financial year. Please note the word by a specified person, the person who is buying that, the crypto, that he has to deduct the TDS. Who has to deduct the TDS? The person who is buying that. This buyer of that area, if he is a specified person, if it does not exceed, the amount does not exceed 50,000, no need to deduct TDS. And in other case, only 10,000. What do you mean by this 10,000? Specified person is only individual or HUF who is carrying on a business, but his gross turnover or gross sale does not exceed 1 crore, or if he is carrying on a profession, his gross receipt does not exceed 50 lakh, then in that case, it is 50,000. If it is more than 1 crore or more than 50 lakh, it is 10,000. For company, it is 10,000. For only for individual HUF who is not required to get his accounts audited, that means whose turnover does not exceed 1 crore or his professional income does not, the gross receipt does not exceed 50 lakh, or he is not carrying on any business. He is an individual HUF but not carrying on a business. In that case, the limit is 50,000. But in any other case, the limit will be 10,000. So one has to be very careful that the no deduction, 50,000 only in case of specified person. In all other cases, 10,000 rupees. No TDS to be deducted. All other cases is 10,000. And please, the government may come out with certain guidelines in that with the approval of the parliament, and that guidelines will have to be placed before the table of the parliament. That point I have also said in that case. So this is 194S, which is there. I'm telling you for deduction of tax at source. Now, what can happen is somebody has a virtual digital asset. If he is transferring that asset without any consideration, he is not, I want to give this crypto asset to Shivam Ahuja, son of Mr. Arun Ahuja. If I want to give to him, he is not my relative. Mind it, he is not my relative. So will that be taxable in the hands of Shivam Ahuja as under section 56 subsection 2, clause 10? Because earlier, if you use the word, what is taxable under section 56 to 10 is immovable property or movable property. The definition of movable property is given in section 56 subsection 2, clause 7, in explanation that says movable property includes shares and security, jewelry, archaeological collection, drawings, paintings, sculpture, work of art. But under section 56 to 10, they said, what is the meaning of property? Earlier, it was different, given in 56 to 10. Now they said under 56 to 10 explanation they have added, the meaning of property will be same as given in 56 to 7, but shall include virtual digital assets. Are you getting my point? What I'm saying? The property, movable property as per section 52(7) read with 56 to 10 means, I said, shares and securities, jewelry, archaeological collection, drawings, painting, sculpture, and bullion. Nowhere I've used the word virtual digital asset. But when I come to 56 to 10, they have said meaning of property will be same which is given in section 56 to 7, but it will include virtual digital asset.
meaning thereby, if I give this virtual digital asset of a value more than 50,000 rupees, and it is given to Shivam Ahuja, he will have to pay tax on that as a gift without consideration. Of course, he will have to pay tax on that. That point has to be kept in mind. This they have inserted, and they have not done anything. They have used the word property means there and includes the virtual digital asset. So be careful about that. They will change, but actually written virtual digital asset. But if I had given that property to my brother, to my sister, to my relative, which is given under section 52(7), then that virtual digital asset which he receives will not be liable to tax, even if it is received under a gift. Are you getting mine? So that gift, or when on the occasion of marriage, or all those conditions are there. Only condition is if I give to unrelated person and the virtual digital asset value is more than 50,000 in a previous year, if I give to him, then it will be definitely taxable in the hands of Shivam Ahuja under the income from other sources. So this is also the point for crypto. What normally people are talking about cryptocurrency, but let me tell you, it is not only cryptocurrency, it can be any kind of virtual digital asset. You might have developed something and you have sold that thing to some other person electronically. Who will come to know? So that is the reason they have said the TDS will have to be deducted. TDS will have to be deducted by the buyer, provided it exceeds 50,000 rupees or 10,000 rupees, as the case may be, and the TDS to be deducted with the rate of 1%. Clear, sir? Any doubt? Anybody can help me out if I miss something, because I have the state of mind. I'm not in full state of mind, so I might miss something. That is the point I wanted to say. So this is. I don't want to use the word there. There are certain exemption under section 10, 4E, 4F, 4G, which have been introduced, no meaning, and some exemption have been withdrawn. If withdrawn, that has no left is important. Section 10.8, 10.8A, 8 or 8A, then or 10.9. Those exemptions were there, but they have no use now, so they have withdrawn those sections. I will come to section 1023C as well as section 11, 12, 13 last, because it is 50 pages which have been given only to these two cases. I will definitely do it. Don't worry, I'll definitely do it. But I don't want to involve you in those complications so that you will say, what is this happening? We don't understand anything. So I'll be talking about that later. Coming to now, proviso to section 17, subsection 2. I remember sometimes in 25th June 21, the government had come out with a press note that if you have incurred any, if the employer has incurred any expenditure on COVID-19, or somebody has incurred expenditure on COVID-19 for anybody else, like I remember Sanjeev Singhal had done a good job of spending money on COVID-19. They had formed an association and they were doing it in the job. The question was, who is paying? The payment was not done by the employer. The payment was made by some other person for the treatment of COVID-19 of that person. Now, the point is, that point I'll take later, but suppose the employer has incurred the expenditure on the treatment of COVID 2019. Avinash, COVID 2019, employer has incurred the expenditure. Proviso to that section says that if the treatment is done in a hospital maintained by the employer, and second is if the treatment is done in a government hospital or for a specified ailment or disease, one more clause has been added, that if the expenditure has been incurred by any person, please note the word by any person, but here it is not person, here it is by the employer, because 17.2 talks about perquisite. If the treatment expenditure has been incurred by the employer on the COVID treatment of the employee or his family member, whatever expense is incurred, it will not be treated as perquisite. We will not call it as a perquisite. That is the point which they want you to tell. The proviso to section 17.2 has excluded the expenditure incurred by the employer on COVID, maybe any amount incurred, 50 lakh, 40 lakhs, whatever amount incurred by the employer will not be included in the salary of the employee. Similar type of a thing has happened in section 56, subsection 2, clause 10. Suppose Ashok Gupta was also doing a lot of job for this
COVID-19, 2019. I remember he got many certificates also through the, of course, incurred through, of course, Shri Ram College Alumni Association. He happens to be the general secretary of that, and he did a lot of activities of. Now the question is, 56 subsection 210, if it is more than 50,000 and it is without consideration, should be taxed. But they have said in the proviso, they have inserted two XI 11 and 12, saying that any expenditure incurred by any person, please not by any person, either by the employer or any person other than employer, any expenditure on the medical treatment of COVID 2019 of the individual shall not be treated as a gift, shall not be taxable under section 56 subsection 2 clause 10. Am I right, sir? Yes, sir. Avinash ji has incurred so much of expenditure on the medical treatment of the many persons, and they might have incurred more than 50,000 to a person, saying no problem. And second is, unfortunately, if the person died and somebody is held and given some ex gratia amount to the family of the deceased, now it can be two times. If that ex gratia amount has been given to the family of the deceased by the employer, the entire amount received by that person will not be taxable at all. Although it is gift, will not be taxable at all if it is given by the employer. To whom it is given? Family of the deceased who's died under tutor. Please note, you have to have a certificate of COVID 2019 death. Then only the amount which is received from the employer, ex gratia amount, fully not taxable under 56 to 10. Similarly, if the amount received from any other person, suppose Sanjay Agarwal ji has incurred expenditure given to the, or we all have contributed amount for the to the and given it to the family of the deceased, then the amount to be exempt is to the extent of rupees 10 lakh. Now, one point I have failed to understand. Suppose it is not 10 lakh, it is more than 10 lakh, 11 lakh, Sanjay ji. Will 1 lakh be taxable or 11 lakh be taxable? If you read the language, the entire amount of 11 lakh be taxable. We will be representing this, that minimum 10 lakh should be given exemption. And if the amount given to the family of the deceased by any other person, then you may tax only the balance amount exceeding 10 lakhs. So that is a post-budget memorandum. Now you are the council member and you are going to be there in the board. Please, post-budget memorandum, please include this point that it is not 10 lakh, it is up 10 lakh exempt, but if it is more than 10 lakh, you will give exemption of 10 lakh and balance only will be taxable. Because in the case of 56 to 10, if I receive more than 50,000, let's say I receive 51,000, it is 50 is not exempt. The entire 51 is exempt. And if I go on the same lines, if it is more than 10 lakh, meaning thereby I have to pay tax on the entire amount of the family of the deceased. This point has to be kept in mind. So I have given you a food for a budget for post-budget memorandum. Please keep in mind that point also. We welcome CA Sanjay Agarwal Ji, is the Central Council member of the Institute. He has just joined us in this deliberation. We welcome you, sir. Please. Shali, sir, welcome, sir. The next point, after 17.2, that the change in section 35.1, what a wonderful thing. The wonderful thing is that under section 35.1, which I make a donation under to scientific research, for social or statistical research, or for certain institution for doing the research, that deduction, now the rule is that whatever contribution is given, the recipient has to file a return, has to file a statement that they have received so much amount, which will be auto-populated in 26 AS, that this amount of donation has been given to the scientific research institution. What have they said in section 35.1, which they have said, the person who has received the donation will not be allowed deduction. The question was, the person who has made the donation will not be allowed a deduction unless that statement is filed and it is given, the details have been auto-populated in the 26. So that correction they have done, deduction, exemption, deduction will be allowed, that the expenditure of 35.1 will be allowed to them. But the person who has made the donation will not be entitled to deduction unless
the recipient has filed a statement of the donation, and it has been properly filed with it included. So that was the 35. Next section was 37, where so if you have incurred any expenditure which is an offense in respect of any offense or prohibited by law, you are not allowed deduction under 37(1). But people have taken the meaning that it is only case of under domestic law, it is an offense or it is prohibited under the domestic law. But they have now clarified whether it is under the domestic law or international law. It does not make any difference. Either in international law, people were spending money which is prohibited by law or which was an offense, or they were given money for compounding of that offense. All that was, they said that this is not covered under 37 because 37 talks about only domestic law. They have clarified whether it is under domestic law or it is under any other law, international law. We are not going to give you a deduction on account of an expenditure related to which is an offense or which is prohibited by law. That point is 37, they have clarified. Next question. The courts are very clever. At one high court, Sisa Goa Limited, Bombay High Court, and the another is Chambal Fertilizers and Chemicals Limited. There, Rajasthan High Court decided that education tax, health and education tax, is an allowable deduction. Is an allowable deduction. The intention of the law was not that, but since the two courts had decided, one was the High Court and the second was High Court of Bombay High Court, the another was Rajasthan High Court. Now, what have they said? Under section 40 clause I, where there is verb use, any tax paid is not an allowable deduction. Expenses which are expressly disallowed. Sanjay ji, their word uses any tax on the profit or gain or the business implication. Now they have given an explanation. This tax will include not only the surcharge, but also the health and education tax, meaning thereby now surcharge, normal tax, health surcharge, health and education tax shall not be eligible for deduction under section. It will be expressly disallowed. That was the purpose of bringing an explanation under section 40A. IA. Clear, sir? This was another point which I wanted to tell you. This was 40 section. Next section, which is called where the change has taken place. There is no change in the capital gain chapter at all. There is no change in the other change in the business chapter also, if I'm not mistaken. Then the change is in section 56 except the 27B, but that is a minor change. That venture capital or international financial center security, that is not a change which is required to be understood. Then there is section 56 to 10. I have already spoken to you, but there is one more change in the section 56 to 10, if I'm not wrong. That change was, let me recall what kind of a change was in 56 to 10. One was the definition of property, the other crypto. We have already done. Or was the crypto part? We have already done. Now coming to the next section. After 56, the section, of course, is 79A. 68. Very good. Thank you for reminding me. You know, you have a proviso under section 68, which says where there is a sum received on account of any share application, was received by a company on account of share application money, on account of share capital, or on account of share premium, then not only the source, but you will have to tell the source of the source, meaning by if I have given capital or share application money to the company, which is closely held company, not the listed widely held company. So widely closely held company received any share capital, has received any share application, or have received any share what you call premium. I have to give the source from whom I have received. I have received from Sanjay Agarwal Ji. It's okay. I have received for Sanjay Agarwal Ji. We used to say I have received for Sanjay Agarwal, but the amendment was made. Not only this, but we'll have to give the source of Sanjay Agarwal Ji also, from where he received that money, to give it to the company. Source of source. And AO should be satisfied with that explanation which has been given by Sanjay Agarwal Ji about source of source. It was only for closely held company and only in case of receipt of money which is credited on account of share application, share capital, share premium. That proviso has now been changed to proviso 2. Proviso 1 has been inserted, saying that
If there is any sum found credited in the books of account which is in the nature of loan or borrowing or any such amount by whatever name called, in that case also for that loan, for that borrowing, you have to give source of source. From where? If I borrowed from Mr. Sanjay Agarwal, I used to give the details of the Sanjay Agarwal that I have received from this and all those things were there. Now I will have to prove where from the Sanjay Agarwal also received that loan. I am wondering, Sanjay Ji, suppose I borrowed from Scheduled Bank. Nowhere exception is given. So will I have to give the source of the Scheduled Bank also from which where it is borrowed? I agree, I have not that given because I borrow from NBFC. Then you have to give the source of the NBFC also from where they have taken that money. So obviously the word used is made. So they obviously the AO will not ask the source of source in case I have borrowed from bank. But if I borrowed from some financial institution or NBFC, so they may ask the source of source also to tell us what is the source, and he should be satisfied, the AO, that the source is correct. So now please note, if you have any amount credited in the books of account found by the AO as loan or borrowing or such amount, you have to give not only the source from which you have borrowed, you have to give the source of the source also from that person who is the lender, from where he got that money. Am I right, sir? Sanjay Ji? This is a very important change in this is proviso 1, proviso 2 is already there, which was earlier proviso 1. Clear, sir? Yes, sir. Yesterday he was talking to me, sir, they have abolished like proviso 2. Proviso 2 is proviso 1 is there, but it will be changed to proviso 2. That was 68. 79A. So 68 is applicable to all loans also. That is also question. Many people are asking. Please. It is, if what is the language? If any sum is found credited in the books of accounts of the assessee for which he does not offer an explanation of the nature and source, or offers an explanation which is not found satisfactory. So that is particular year. Not the, but 148 comes, then it's okay. If 148 comes, it's okay. But otherwise, source of source is going to be there from assessment year. Word is written, if I'm not wrong. That provision has been inserted. Yeah. 1st April 23. That's why I'm saying. So they can't do that. But it will be 23, 24 on new loans. New loans or borrowings. New loans or borrowings. Source of source. That has already been done. Now, what is the question of source in that case? It's already done. It is per relevant previous year when 68 is applicable. Now, since you have talked about 68, coming to that, Ravi ji हमेशा कहते थे भैया कोई 68 हो जाए, 69 हो जाए, 69 ABC हो जाए, कोई बात नहीं है, हम उसको बिजनेस इनकम दिखाकर और उसका लॉस सेटअप कर लेंगे. कोई बिजनेस इनकम प्रॉफिट लॉस होगा या डेप्रिसिएशन होगा, हम उसको सेटअप कर लेंगे. हम तो बिजनेस इनकम दिखाएं. मैं कहता था भैया बिजनेस इनकम तो अलाउड ही नहीं. ये तो वहां तो सेक्शन 115 बीबी में तो कहता है देयर शुड बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट एंड नो डिडक्शन, नो एक्सपेंस, नो लॉस विल बी अलाउड फ्रॉम देयर. कहते थे नहीं, सपोज कीजिए एक इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री वहां पर सर्च हो गया और सर्च के सामने इन्वेंट्री बढ़ गई या कम हो गई, तो हम तो कहेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस इनकम हो गए. उन्होंने क्लियर कर दिया 79A में लिए अगर कोई सर्च हुई है, कोई सर्वे हुई है अदर देन TDS सर्वे, any search conducted or any survey conducted and there is a income which is there, which is of the nature of section 68, 69, 69A, 69B, that at that income, no loss will be allowed to be set up, which is, we call it as undisclosed income. No loss will be allowed to be set up from such undisclosed income. It is very, very clearly said. So Ravi ji, no, it is not a business. अब नहीं है ना सर, जो मैं कह रहा था वो तो ठीक था ना. अब ये रवि जी कहते हैं इसका मतलब पुराने में तो था. अरे पुराने में तो था. अब ये लॉयर हैं और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. फर्क लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का यही होता है. मैं वो देखता हूँ जो लॉ में लिखा है, ये वो देखते हैं जो लॉ में नहीं लिखा. मैं क्या कर सकता हूँ? आप सरकार हो, हम एसएससी हैं. ना, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सर. थोड़ा सा लाइट करना था मूड, मैंने इसलिए लाइट मूड कर दिया. तो दिस इज 79A जिसने कह दिया लॉस अलाउड नहीं होगा फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड इनकम व्हिच इज कवर्ड अंडर 68, 69, 69AB. क्लियर है सर? और वो सर्च और उसकी वजह से ही हुआ. तो ये मैंने आपको 79A बताया. आइए आगे सक्चे चलते हैं. 80CCD सर, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू नेशनल पेंशन स्कीम फॉर नॉन गवर्नमेंट employer contribution of 10% is allowed as deduction under section 80CCD. As regards contribution by the central government,
They had increased this contribution from 10% to 14%, and that was allowed as deduction under 80CCD to the extent of 14% employer contribution. I'm not talking about employee contribution. Employer contribution, and central government is contributing 14% for national pension scheme. But this was only for central government. Now they have given this benefit also employer contribution by state government. State government contributing as employer to the national pension scheme of the employee. The contribution which will be allowed as deduction will now also be 14%, level playing for central and state government. But for all other non-government organization, it is 10% employer contribution. Right, sir, Sanjay ji? This is 80CCD. 80DD. You know, 80BB, unfortunately, if somebody has a dependent with physical disability or severe disability on him, you can get the dependent insured. You don't have to insure that, you have to pay, insurance has to be taken in the name of that individual who is insuring that physical disability person. Or if it is HUF, it have to be taken the policy in the name of the member. Earlier, the law used to say that if you that this policy allows you to get the what you call annuity after the death of that individual whose name that was done, or after the death of the member of that HUF, and the person with disability was getting that benefit as an annuity. Now they said during the course, yeah, I'm still alive, but suppose unfortunately there is some person with physical disability dependent on me, and I'm paying for insurance of that person. They say only after my death he will get the annuity. But now the provision is even that person has not died, or that member of the HUF has not died, the annuity can be given to that person with disability, provided my age is 60 years or more. My age or age of that member of HUF is 60 years or more. Earlier it was only after death. Now it is even I'm alive, but I have completed 60. So still that this person with physical disability needs money, he can be given annuity by the insurance company. Clear, sir? This was 80D. 80DD. Next is section 80IAC. Startup were getting a benefit of a deduction of 100% for a 3 consecutive previous year, 3 years, 3 years. But that was that was only up to 31st March 22. They have extended the date up to 31st March 23. So that is 1 year extension has been given to startup to claim exemption of deduction of the income which they have earned from that startup activity for a period of 3 years. So this is 80 IAC. Next section. Next, if I look up the next change is very important change. If I have left anything, please remind me. But 92 CA, I am leaving it to, he is talking about TPO, or he is talking about transfer pricing. The transfer pricing. 92 CA is also going to be faceless. 92 say transfer pricing will also be going to be faceless. I'll tell you, but that point is there. But I am coming to the next point now, updated return. The suggestion was made by us when we were redrafting the law, that there is a possibility that I have missed, or there is an omission of certain income. I have not filed the return later. I have not shown that income, and subsequently I realized that this much of money has not shown as income, but I cannot revise the return because the time period for revising the return at that particular time was 1 year from the end of the relevant assessment year. Now time period for revising the return today is only 31st December, if I'm not wrong. How can I revise? Suppose I forget to include some interest, forget to include some dividend, forget to include certain income. I did not file, I did not mention in the return, and I cannot revise also. So we suggested them, he's an honest man. He has forgotten to show that income. Now suddenly he realizes that he has not shown that income, but he cannot write the return. 119.2, section 1192 is a very big exercise. How will you do that? So the question was, some leverage be given to him that he can file a return of income. So that concept has been introduced by inserting section
subsection 8A under section 139. We call it as updated return. If in case of an assessee who has not filed a return or has filed a return, in both cases that be given. Suppose that person did not file return at all. Suddenly he realized, oh, that capital gain acquisition, it was not under REPLAR, it is the normal under Land Acquisition Act, I should have paid tax, or it is not rural agriculture income, rural agriculture is exempt, or it is like that income I have shown as exempt, but it is taxable. Suddenly he realized, what should he do? He cannot file the return. So they said, you have not filed the return, or you have filed the return under section 139(1), within the due date, or under 139(4), belated return, or under 139(5), revised return. You have already filed or not filed at all. You can still file an updated return under section 139(8)(a) within a period of 24 months from the end of the relevant assessment year. 24 months का टाइम दे दिया गया आपको कि आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग दैट इनकम। लेकिन रुकिए, ये अप्लाई नहीं करेगा ये सेक्शन अगर आपकी रिटर्न लॉस की जा रही है 139(8)(a) में, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। या आपकी जो आपने जो असेसमेंट आपने ऑलरेडी हो चुकी है, यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज द इनकम, नो डिक्रीज द टैक्स लायबिलिटी नॉट अलाउड। Tax liability should increase by filing that return. It should not decrease by filing that return which has already been done. Or you are not asking for any refund. The refund cannot be increased or the refund cannot be given to you for this purpose. तो ये भी याद रखिए। और फिर और भी उन्होंने कहा कि रुकिए, आप जो ये 139 की अगर सर्च हो चुका है या सर्वे हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, अदर देन TDS सर्वे, और सर्वे कंप्लीटेड हुआ है या सर्च हो चुका है, इनिशिएट हो गया, तो उसकी रिटर्न अपडेटेड नहीं जा सकती है। वो बिल्कुल अपडेटेड नहीं जाएगी। कभी आप सोच लो कि उसको तो अपडेट कर ले। और एक और है, अगर आपकी कोई रिसेसमेंट, कंप्यूटेशन, रीअसेसमेंट, असेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन पेंडिंग है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं ला सकते। मैंने कहा असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन पेंडिंग है। दैट मीन्स 147 रेड विद 148 पेंडिंग है। अगर 148A में अगर 148A है कि मुझे एक नोटिस आ गया कि भाई आप शो कॉज है कि आपकी कोई इनकम स्केप हुई है, वो अभी पेंडिंग नहीं है, वो आप अभी भी अपडेट करके आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपडेटेड फाइल करेंगे। लेकिन अपडेटेड फाइल करते हुए आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना है एज पर सेक्शन 139(9) बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। हमने कहा था एडिशनल टैक्स, पर हमने उनको ये नहीं कहा था कि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक सेक्शन 140B डालकर बताया कि एडिशनल टैक्स कैसे निकालना है। और एडिशनल टैक्स निकालने का तरीका बता दिया। 2 तरीके बताए कि आपने पहले कभी रिटर्न ही नहीं भरी है, उस केस में एडिशनल टैक्स निकालने के लिए क्या है, अपडेटेड रिटर्न का टोटल टैक्स निकालिए। अपडेटेड रिटर्न का टोटल जो आपने ऑलरेडी अर्न करके टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाली। उसके बाद क्योंकि आपने रिटर्न पहले भरी नहीं है, तो जो TDS कट चुका है या कलेक्ट किया हुआ है वो लेस कर दीजिए। कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो कलेक्ट कर लीजिए। कोई 115JAA का बेनिफिट है, 115JAB का ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट है, वो लेस कर लीजिए। आपका कोई और अगर कोई 1998 का रिलीफ मिलना है, फॉरेन टैक्स का जो रिलीफ मिलना है 1998 है, वो भी लेस कर लीजिए। बाकी एडिशनल टैक्स आएगा। लेकिन इसमें जोड़ना क्या है, अगर क्या जोड़ेगा, इंटरेस्ट अंडर 234A, 234B और 234C। ये तो वो आ गया। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न भरी हुई है तो क्या कैसे निकालना है एडिशनल टैक्स? सर देखिए, ऑलरेडी रिटर्न भरी हुई है तो जो अब टोटल टैक्स बना उसमें से जो ऑलरेडी रिटर्न का टैक्स है वो तो ऑलरेडी ले रखा आपने, वो लेस कर दीजिए। जो इंटरेस्ट लेस कर दीजिए जो दे रखा है। हाँ, वो बाद में करूंगा इंटरेस्ट लेस, वो पहले वो लेस कर दीजिए। फिर दूसरा, कोई जो नई इनकम है उसका कोई TDS है तो TCS है, वो भी लेस कर दीजिए क्योंकि आपने पहले लिया नहीं है, वो TDS TCS कटा हुआ है तो वो भी लेस कर दीजिए। कोई 1998 का रिलीफ मिलना है तो वो भी लेस कर दीजिए।
कोई ब्रॉड फॉरवर्ड AMT है या ब्रॉड फॉरवर्ड मैट है और उस इस वजह से मिलता है कोई टैक्स, तो वो भी लेस कर दीजिए। कोई रिलीफ है तो वो भी लेस कर दीजिए। उस लेस करने के बाद इंटरेस्ट नया जोड़िए, वो बाद में जो, लेकिन जो पुराना इंटरेस्ट दिया हुआ है वो लेस कर दीजिए। एम आई राइट सर? मेरी गलती हो तो पकड़ लेना, वो लेस कर दीजिए। आप टोटल इंटरेस्ट में से, टोटल इंटरेस्ट जो बना उसमें से जो ऑलरेडी इंटरेस्ट हमने 234A BC का दिया है लेस कर दीजिए। लेकिन एक बता दूं, 234A का इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दी थी, क्योंकि 234 पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल की हुई है। लेकिन अगर रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी थी, लेट करी थी, तो 234A का इंटरेस्ट पड़ना तो पड़ेगा। तो वो अपडेटेड इनकम का भी उसी डेट तक निकालना और उसके बाद BC भी लेना है। अब कितना देना है सर? अगर एक साल में रिटर्न भर देते हैं 12 महीने में तो 25% ऑफ द एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट। अगर आप 24 महीने में भरते हैं तो 50% ऑफ द एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फायदा क्या हुआ? इंटरेस्ट दे ही रहे, लेकिन इंटरेस्ट हमने 25% दिया, टोटल नहीं दिया, और 50% दिया, टोटल नहीं दिया, लेकिन पेनल्टी तो बच गई सर। पेनल्टी भी तो बच गई, नहीं तो पेनल्टी भी पड़ती, इंटरेस्ट भी पूरा पड़ता जो भी मैं करता, और मेरी इनकम का जाता, नहीं तो 148 होता तो क्या होता वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरचार्ज इंक्लूड है इसमें सर, वो तो इंक्लूड, सरचार्ज तो इंक्लूड होते हैं। तो ये चीज़ों का फायदा हुआ जो मैंने बोला, 139(8)(a), 139(9), 140 कैपिटल A, ये तीनों चीजें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आप बताया। मैं एक चीज भूल गया और इन्होंने भी मेरे को याद नहीं कराया, सेक्शन 28 क्लॉज IB। सर आपको कराना चाहिए था। नहीं, ये TDS का क्या मतलब है? सेक्शन जा चुका है और आप कह रहे TDS का कराना है। ये देखिए, मेरे को चेक भी नहीं कर सकते। आइए वापस आता हूँ। 28 क्लॉज B में लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एनी परक्विजिट रिसीव्ड वेदर इन काइंड और इन काइंड, वो जो होगा वो, अगर इफ यू आर गेटिंग दैट बेनिफिट और परक्विजिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस, तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। सपोज कीजिए मैंने मैंने अपने वेंडर को कहा, जो बायर है, कि तू इतना टारगेट कर ले, तू इतनी सेल कर दे, मैं तेरे को कार फ्री दूंगा, मैं तेरे को सिंगापुर की विजिट लेके जाऊंगा। चलिए, सिंगापुर कोई नहीं जाना चाहता, बैंकॉक तो जाना चाहते ही है, तो उसको वहां लेके जाऊंगा, कहीं और लेके जाऊंगा। सो वो जो बेनिफिट दिया गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस, या कोई और बेनिफिट दिया गया, वो वाला, वो वेदर कन्वर्ट इन मनी और नॉट इन काइंड, वो बेनिफिट इनकम मानी जाती है 28(4) में। और आपको पता है फॉर्म 3CD में भी भरना पड़ता है, आप तो ऑडिट करते हैं, हालांकि 90% 3CD गलत ही है, लेकिन जो भी आप भरते हैं लिखना पड़ता है। लेकिन वो बताएगा तो लिखोगे ना। इफ इट डज नॉट कम टू योर नोटिस, हाउ विल यू डू इट? कि भाई ये उसको बेनिफिट मिला, ये फ्री विजिट करके आया, या उसको टीवी फ्री मिल गया, इसको फ्रिज मिल गया, इसको कार फ्री मिल गई, उसको क्या पता ये क्या बेनिफिट? यहाँ कोई प्रोफेशनल को भी कोई बेनिफिट इस तरह के काइंड के मिलते हैं, तो ये टैक्सेबल है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन वो आया उसको। अब करें क्या इसको? उन्होंने कहा इसको मॉनिटर करने का एक तरीका बनाते हैं। हम 194R में उसकी ड्यूटी लगाएंगे, जिसने वो जो बेनिफिट दिया या जिसने वो परक्विट दिया, कि उसके ऊपर TDS काटे, उस वैल्यू के बेनिफिट और परक्विट कितना, 10% TDS काटना पड़ेगा द पर्सन हु हैज गिवन दैट परक्विट और द बेनिफिट टू यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस। 10% नहीं सर, जो पर्सन आपको बेनिफिट दे रहा है वो उसकी वैल्यू करेगा और उसका 10% TDS काटेगा। अमाउंट थोड़ी दे रहा है। सुनिए, अगर वो कैश में दिया तो वो हो गया, अगर इन काइंड में दिया, पार्टी इन काइंड दिया, पार्टी इन कैश दिया, अगर 10% कैश के बराबर है तो उसे काट लेगा, अदरवाइज ही विल इंश्योर। ऐसे ही तो होता है, अगर कार, हाँ ग्रॉस उसके ऊपर ग्रॉसिंग होगी, he will have to ensure कि उसके टोटल वैल्यू पे 10% TDS कटना है, चाहे उससे कलेक्ट करे या ग्रॉस अपनी जेब से दे। ही कैन कलेक्ट और जेब पे से देगा। ये लॉटरी में भी होता है, ये तो जो काइंड में लॉटरी दी जाती है उनमें भी होता है, तो वो उसको TDS काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। कोई TDS नहीं काटना पड़ेगा अगर अमाउंट 20,000 से ज्यादा नहीं है, कोई TDS नहीं। अब अमाउंट 20,000 से ज्यादा नहीं है तो कोई TDS नहीं काटना है। एक और प्रोविजन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी के अंदर, इधर देखिए सर क्या पॉइंट था, कि वो TDS नहीं काटेगा अगर 20,000 से कम है। एक और भी चीज है इसमें कि
व्हाट काइंड ऑफ, जो टीडीएस कटा वो तो है, उसका जगह सेक्शन पढ़ो ना, उसके अंदर एक और प्रीमियम है। चलिए इन द मीन टाइम मैं बताऊंगा, बट 194 आर बड़ा क्लियर कर गया कि आपको टीडीएस काट के जमा कराना है। इसमें कोई वो नहीं अमाउंट की 20,000 की, 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा नहीं है तो कोई नहीं काटना। एक और पॉइंट भी था सर, देख के बताओ सर। नहीं है, दिल्ली का ट्रिप होगा 20 से। हाँ, अगर दूसरा एक और था, तभी मैं कहूँ मेरे को याद आ गया, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है और बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या वो प्रोफेशन कर रहा है 50 लाख से कम है, तो उस केस में उसको टीडीएस नहीं काटना है। छोटे आदमी को छोड़ दिया, इंडिविजुअल एचयूएफ सिर्फ सर, इंडिविजुअल एचयूएफ, उसको फिर टीडीएस नहीं काटना है। मैंने कहा एक पॉइंट और था जो मैं आई वाज नॉट रिकलेक्टिंग इट। सो दिस इज 194 आर रेड विद ऑफ कोर्स 28.4 में वो इनकम मानी गई है, जिसका जो वैल्यू उसको जो मिलता है, लेकिन जो वो बेनिफिट दे रहा है उसको उसका टीडीएस काटकर देना पड़ेगा, ताकि मॉनिटरिंग हो गई। क्योंकि टीडीएस कटा होगा तो आपके 26 एएस में आ जाएगा, और 26 एज में आ जाएगा तो आपको वो इनकम दिखानी पड़ेगी। अभी तक तो छोड़ दिया करते थे अरुण जी, चलो मुझे तो पता ही नहीं है कि कोई इनको बेनिफिट मिला। अब अरुण जी 3CD में नहीं भी डालोगे तो वो पकड़ा जाएगा। सो क्लियर हुआ सर? ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। 28 रेड विद 194। आगे चलते हैं। आगे सर मैं क्या बताऊं, अभी सेक्शन आए सारे, और उस सेक्शनों में उन्होंने कहा था कि भैया देखिए, अगर हम 148 करेंगे, 148A सेक्शन आया था, अगर वो फ्लैग ऑफ होती है वो इनकम कैसे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से था ना, और यहाँ सीएजी वाला करता है। वो फ्लैग ऑफ द वर्ड उन्होंने फ्लैग ऑफ काट दिया, चलो भाई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से मिलती है फ्लैग ऑफ, चलो वर्ड हटा दिया। लेकिन दूसरा तो बेड़ा गर्क कर दिया। पहले तो सिर्फ सीएजी की वजह से ऑडिट ऑब्जेक्शन था, अब कहता नहीं 148 ऑडिट ऑब्जेक्शन हो, 148 ऑडिट ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन हो, या कोई इंफॉर्मेशन आ गई कौन की 90 सेक्शन की, 90A सेक्शन की, उस केस में भी, या कोई इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई कहां से, उसने रिस्क अपनी 133 किया, 133A करा, कॉलिंग फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन, वो से भी आई तो भी वो उसका उसमें कर देगा। अरे एक और पॉइंट था उसमें, 4 थे नहीं, वही वाले जो रिस्क मैनेजमेंट, सर्च के केस में वो बाद में नहीं, एक और है जो कोर्ट की वजह से आई, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की वजह से आई। वो 4 चीजों के लिए लेट मी टेल यू, अब एक नहीं था, पहले था सीएजी। कहाँ गया वो सर? कल ही तो लॉ बनाया था आपने, अभी तो चालू ही नहीं हुआ है, और आपने फिर उसको चेंज कर दिया। क्या कह दिया? 1 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, आई हैव नो प्रॉब्लम, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से पता लगेगा। अब ये कौन कौन से ऐड कर दिए कि भाई कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन हो, हम सारी उम्र यही तो करा करते थे, ऑडिट ऑब्जेक्शन आके क्या करा करते थे, समझ गए ना मेरा पॉइंट? वो कहते थे आपकी ऑडिट ऑब्जेक्शन है, आइए, समझ गए ना सर? तो ऑडिट ऑब्जेक्शन भी आ गया, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन 1990A में भी आ गया, वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से उनको पता लग गया, वो भी आ गया आपका। वो उसने अपनी कोई कॉल फॉर इंफॉर्मेशन 133A में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, वो कह रहा है ना भाई इसके लिए तो जरूरत ही नहीं, ये भी आ गया। और आपको बताया कोई कोर्ट की वजह से भी आ गया। अगला एक और था जो रवि जी ने पॉइंट आउट किया था मुझे जब हम डिस्कस कर रहे थे, कि देखिए ये जो 3 साल और 10 साल है, 3 years any income escape, 3 to 10 years if the income escape is 50 lakh or more, but वो लिखता था 3 to 10 years if it is found from your books of accounts and it represents the asset, वहां भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब लिखा it represents the asset or it is on account of any expenditure on any event or any ceremony or even any entry in the books of account। तो बचा क्या सर? अरे बचा क्या मेरी भाई सुनो, आपने कहा 3 से 7 साल तक, 10 साल तक आप जा सकते हो। पहले लिखा था दैट इनकम शुड रिप्रेजेंट, यही लिखा था, सम एसेट, दैट अनडिस्क्लोज्ड इनकम शुड रिप्रेजेंट सम एसेट। संजय जी मैं ये ठीक कह रहा हूँ ना? अब वो रिप्रेजेंट सम एसेट तो कर दिया, लेकिन किसी बेटी की शादी करी है, उसमें खर्चा किया है, शादी हुए अभी 10 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो आप तो खतरा टला गए कि भाई वो पूछ सकते हैं कि भैया ये इनकम स्केप है, आपने शादी में खर्चा 5 करोड़ किया या तो 1 करोड़ ही दिखाया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा, या कोई एंट्री है, तो वो सारा का सारा पर्पस ही डिफीट हो गया। अब तो सोचिए 10 साल ही हो गए, प्रैक्टिकली 10 साल ही हो गए, 50 लाख और बोल।
सो पहले तो हम सोचते थे चल रिप्रेजेंट एसेट होगी तभी तो पकड़ोगे, मेरे को कोई एसेट ही नहीं है, मैं खा पी के मौज कर गया तो मेरे को क्या दिक्कत है। अब तो मैंने शादी में खर्च किया है, वो कल पूछ सकते हैं 10 साल तक कि भाई शादी में खर्च किया तो इसका बताइए अकाउंट कितना दिया था, एक कब स्केप दिया, कहाँ से आया था ये पैसा तो शादी में खर्च किया। Am I right सर? कोई एंट्री और एंट्रीज हो तो भी होगा। तो 148 में आया। और एक और था कि सर्च के केस में हम कहते थे, पहले उन्होंने लिखा था 3 साल तक तो वो वहां से पता लगेगा डीम्ड इंफॉर्मेशन, और बाकी 7 साल के लिए आएंगे। अब तो वहां लिख दिया पूरे 10 साल की डीम्ड इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, सर्च और सर्वे हुआ अदर देन टीडीएस सर्वे। क्लियर है सर? ये भी चेंज आ गई, 148 का बेड़ा गर्क कर दिया। 148A में एक चीज और कर दी, पहले शो काज नोटिस देना था सर, क्या कि जब भी उसको एक इंफॉर्मेशन मिली पहले वो इंक्वायरी करेगा, फिर इंक्वायरी करके वो शो काज नोटिस इंक्वायरी करेगा विद द अप्रूवल, फिर इंक्वायरी करके शो काज नोटिस देगा विद द अप्रूवल। वो वर्ड भी हटा दिया। अब तो वो इंक्वायरी करके अगर उसको लगेगा कि इनकम स्केपिंग असेसमेंट है, वो शो कॉज नोटिस विदाउट अप्रूवल दे देगी। पहले तो अप्रूवल लेनी थी, अब अप्रूवल की 148 में तो लेगा एक बार। हाँ, वो 148 की अप्रूवल, वहां पर भी 148 की अप्रूवल एक जगह नहीं है। अगर उसने 133A से इंफॉर्मेशन की है, कॉल की है, तो उसके लिए तो अप्रूवल 148 की भी नहीं, वो भी खत्म कर दी। सर बचा क्या है? आप पहले हमें लॉलीपॉप देते हो, फिर लॉलीपॉप भी इतना कड़वा निकला कि वो तो मुझे समझ में नहीं आई क्या, वो सब कुछ तो आपने चेंज कर दिया पुराना। अभी तो लॉ एप्लीकेबल होना था, इसी साल 2023 से तो एप्लीकेबल हुआ, और आपने क्या करा, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन सारा 148 बदल दिया सर, 148A में बदल दिया, और आपको वो बताया इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट, यही था ना, सजेस्ट द इनकम एज एस्केप्ड असेसमेंट। वो सजेस्ट में तो लिखा था आपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, और दूसरा लिखा था CAG ऑर्ड। ये तो अब तो सब कुछ कवर कर दिया सर। तो ये भी आपको देखिए काफी मुश्किल होने वाली है। अभी वो हमारे से शायद बदला ले रहे हैं कि पिछला 148 रह गया जो अभी तो कोर्ट में है। हम तो सोचे तो उसमें भी कोई चेंज ना आ जाए। मैं तो सोच रहा था हो सकता है उसमें ही चेंज कर दे कि ये वाले प्रोविजन अगले साल से लगेंगे, पुराने प्रोविजन कंटिन्यू करेंगे। वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वो प्रोविजन शायद उन्होंने नहीं लिए, लेकिन था तो वो थी। तो मैं ये भी बता रहा हूँ ये चीज चेंज हुई है। अब एक बहुत दो चार चीज अच्छी आई। देखिए नोटिस ऑफ डिमांड आता है 156 में, अविनाश जी आता है ना। आप IBC में चले गए, वहां पर उन्होंने आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया या माफ कर दिया। अब नोटिस ऑफ डिमांड को वो कहेगा मेरे पास तो पावर ही नहीं है नोटिस ऑफ डिमांड को रिड्यूस करने की, मैं आपका नोटिस ऑफ डिमांड कैसे रिड्यूस कर दूं। IBC ने कहा होगा कि भैया इसको माफ कर दो, या इसका 50% टैक्स दे दो, या 25% दे दो, पेनल्टी माफ कर दो, इंटरेस्ट माफ कर दो। मेरे पास तो पावर ही नहीं है। 156 में तो नोटिस ऑफ डिमांड देना पड़ता है। तो आप 156A डाल दिया, क्योंकि इंसॉल्वेंसी कोड की वजह से कोई आपको डिडक्शन मिला, कोई आपको रिलीफ मिला, कोई आपको बेनिफिट दिया, तो उस केस में AO कैन रिवाइज दिस नोटिस ऑफ डिमांड। वो नोटिस ऑफ डिमांड दूसरा बना देगा और उसमें से वो डिडक्ट कर देगा जो भी बेनिफिट इंसॉल्वेंसी कोड ने आपको दिया। अब अदर पॉइंट, ये रवि जी वही लड़ते रहते थे, 170 सेक्शन का सेक्शन है 2A। रवि जी कहते थे जब मर्जर हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया या डीमर्जर हो गया, अब डीमर्जर मर्जर तो होता है, लेकिन आपको पता अपॉइंटेड डेट और कोर्ट ऑर्डर में बहुत टाइम होता है। कोर्ट कह रहा था जिस दिन अप्लाई किया अपॉइंटेड डेट 1.5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी। रेट्रोस्पेक्टिव भी होती है अपॉइंटेड डेट हमेशा, और टाइम लगता है कोर्ट में। NCLT ने टाइम लगा दिया आपको ये देने के लिए। अब आप कहते थे जो असेसमेंट है वो कंपनी तो रेट्रोस्पेक्टिव कर दी, तो कंपनी के ऊपर आप कैसे असेसमेंट कर सकते हैं? वो तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उस पर तो अपॉइंटेड डेट आ गया। उन्हें कहते रुक जाइए, जो भी असेसमेंट हमने प्रीडेसेस कंपनी को करी है, जो जिसको मर्ज किया है, वो वैलिड मानी जाएगी एज इफ इट इज ऑन दी सक्सेसर कंपनी। वो सक्सेसर कंपनी की मान ली जाएगी असेसमेंट। एम आई राइट सर? कुछ आप थोड़ा करेंगे लाइक? सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी सर उसमें तो। हाँ तो ठीक, तो तभी तो ओवररूल किया सुप्रीम कोर्ट, ओवररूल किया, मुझे थोड़ा किया था। लेकिन लॉ तो बन गया ना। सब सेक्शन 2A डाला है 170 में, और एक और चीज है 170A भी डाल दिया। वो क्या डाला सर? वो ये डाला कि देखिए मैंने कराया। क्या डाला था आपने? करो, आप ही बता दो क्या करा था। नहीं बताइए प्लीज बताइए, अच्छा रहता है, प्रैक्टिकल पता लगेगा। सर व्हाट हैपन इन द केस ऑफ मर्जर्स, सो हमारी अपॉइंटेड डेट जो होती है वो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की होती थी। जब हमारा मर्जर हो जाता था, व्हेन इट वाज अप्रूव्ड बाय द NCLT, so then we have to consolidate the accounts of 2 companies
and file a revised return which is a consolidated return. And जो मर्ज कंपनी हो गई और जब तक मर्जर का ऑर्डर नहीं आया तब तक अलग अलग फाइल करते थे, बट रिवाइज रिटर्न का टाइम जो है वो चला जाता था। तो मॉडिफाइड रिटर्न आ गया ना। हाँ, तो मॉडिफाइड आ गया। तो अब जो है हमारे को बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, इसमें सर क्या हुआ, बहुत सारे केसेस में केस स्क्रूटनी में नहीं आया। अगर स्क्रूटनी में आते थे तो हम रिवाइज कंप्यूटेशन फाइल करके असेसमेंट करा लेते थे, बट अगर केस स्क्रूटनी में ही नहीं आया तो कैसे वो फाइल होगी और सारी चीजें होगी। तो उसकी वजह से जो है टैक्स भरेंगे मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड रिटर्न होगी उसमें, नहीं टैक्स ऑलरेडी उसमें भी दिया हुआ है, वो तो जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप मॉडिफाइड रिटर्न करा के अपने ऊपर असेसमेंट करा, ये वाला पॉइंट अच्छा है, बुरा नहीं, फेवरेबल पॉइंट है। सर लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट, दिस इज ऑल अगेंस्ट सर, दिस इज फॉर गुड पॉइंट व्हिच विल पे। फिर आगे मैंने टीडीएस के प्रोविजन तो कर दिए, लेकिन 206A 190.1A आइए ध्यान रखना, 190.1A में when I buy any immovable property I was supposed to deduct tax at the rate of 1% of the actual consideration। संजय जी ठीक है ना, अब the actual, अब उन्होंने कहा no, 1% of the actual consideration the stamp duty value whichever is higher, whichever is higher। और secondly जो 50 लाख की लिमिट थी वहां पर लिखा था actual consideration does not exceed 50 lakh, वहां लिखा actual consideration as well as the stamp duty value should not exceed 50 lakh। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो करना है, लेकिन वहां 50 लाख हम एक्चुअल कंसिडरेशन को देखते थे, स्टैम्प ड्यूटी को नहीं देखा। अब कह रहे हैं एक्चुअल कंसिडरेशन जो 5% वाला आया था उसमें वो कैसे देखेंगे, 5% का डिफरेंस जैसे छोड़ना है ना उसमें काटने के लिए। सर 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 जो 50 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन 5%, 10% यहाँ के लिए नहीं है, वो 50C के लिए आप अरे सर नहीं, आप गलत कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा 50C के अंदर उसकी कंसिडरेशन प्राइस हम वो मान लेंगे जो एक्चुअल कंसिडरेशन है, बेनिफिट ऑफ 5 नहीं है, 10 है। वो नहीं सर, सपोज करो 50 का उधर 52 है स्टैम्प ड्यूटी, तो 52 पे आप टीडीएस तो काट लोगे, लेकिन कंसिडरेशन उधर 50 कंसीडर होना है। कोई बात नहीं सर, टीडीएस काटने से मतलब थोड़ी कि इंटायर वो इनकम वो उठा के 26AS जोड़ देगा कि इधर 52 है, इधर 50 है। आपकी बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि आप कह रहे हो कि मेरी एक्चुअल कंसिडरेशन 50 थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 है और 10% अलाउड है, तो 10% के हिसाब से तो ठीक है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखा है, यहाँ पर वो कंसेशन ऑफ 5% या 10% नहीं दिया सर। बजट पोस्ट बजट के लिए हाँ वो संजय जी पोस्ट बजट में तो 26AS होना चाहिए ना। संजय जी को मटेरियल दे देते हैं कि ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए 194IA। अब आया 206AB जो 2 साल के लिए नॉन फाइलर रिटर्न था, कि 2 साल तक की वो हो सकता था कि आपको ट्वाइस द रेट काटना है, वो 2 साल का पीरियड 1 साल कर दिया गया, 206AB को 1 साल कर दिया गया, तो ये भी हो गया खत्म। आगे चलिए, एक ऐसा था कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता था टीडीएस का 1% या 1.5%, तो उसमें क्या होता था कि वो एसएससी डीम टू बी इन डिफॉल्ट होता था। तो उन्होंने कहा जी अब जो वो होगा वो ऑर्डर बाय द एओ का जो निकलेगा जो एक्स्ट्रा वो उसके ऑर्डर बाय एओ। अब देखिए 271AAD आया था पेनल्टी का कि आपका फॉल्स इंफॉर्मेशन है, फेक इनवॉइस है, ये है, तो टैक्स 100% ऑफ दैट लगना था सर पेनल्टी। लेकिन कौन लगा सकता था? असेसिंग ऑफिसर। ये पावर कमिश्नर अपील को भी दे दी गई। 271AB में भी कमिश्नर अपील को दे दी गई, 271AC में भी कमिश्नर अपील को ये पावर दे दी गई टू इम्पोज पेनल्टी। 271AC क्या था कि देयर इज ए इनकम अंडर 68, 69, 69 आई हैव रिफ्लेक्टेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम, और आई एम नॉट रिफ्लेक्टेड बट इट इज फाउंड बाई द एओ। अगर फाउंड बाई एओ होता तो टैक्स तो वही लगता था 60%, 25% प्लस 4%, बट 10% पेनल्टी लगती थी अंडर सेक्शन 271AAC, राइट है। और मैं रिफ्लेक्ट कर दूं रिटर्न ऑफ इनकम है तो पेनल्टी नहीं लगती थी, यही फर्क था सर। 78 और 88 पेनल्टी 10% लगती थी। कौन लगाता था? एओ। अब कमिश्नर अपील भी लगा सकेगा। कमिश्नर तो एनहांसमेंट भी लगाएगा ना। ओ सर, कमिश्नर सॉरी, व्हेनेवर अपील इट इज अ फुल केस ऑफ असेसमेंट, ही इज एन असेसिंग ऑफिसर। प्लीज एनहांसमेंट की बात देखिए, बिल्कुल गलत ना कहिए। When AO has not imposed penalty और वो कोई केस गया वहां पर उसने अपील में ले लिया या उसने जो भी किया, पेनल्टी तो लगा सकता है ना। पहले तो असेसिंग ऑफिसर कमिश्नर तो नहीं लगा सकता था, सिर्फ एओ लगा सकता था। इसी तरह 271AB ये जो सर्च के एक्सपर्ट बैठे हैं वो कहते थे उस वक्त डिक्लेयर कर दो तो 30%, अगर बाद में करोगे रिटर्न फाइल करने का तो 60%, यही कहते थे। लेकिन कौन लगा सकता था? अब कमिश्नर अपील भी लगा सकेगा। 271AA, 271AC, 271AAD, AAC तीनों में लगा दिया।
तीनों में कर दिया सर। और एक और मुसीबत डाल दी, एक और नई पेनल्टी डाल दी, 271 AAE। वो कौन सी पेनल्टी है सर? वो जो सर्च, वो जो सर के वो, अब मैं वहां हूँ तब बताऊंगा ये। आइए, अभी कोई रहेगा नहीं तो मैं अब जा रहा हूँ A11 10 23 C 11 12। बस सर वो 28 का सर कह रहे हैं कुछ ना, मतलब वो जहाँ ब्रेकिंग इशू आ गया था वो कलेक्टिंग हुई 28 सेक्शन की। 28(4) में वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट व्हिच यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन इज योर इनकम। 28(4) में वो इनकम मानी जाती है। जैसे आपको आपको कहा, आप मेरे स्टॉकिस्ट, मैंने आपको कहा अगर 5 करोड़ की सेल करोगे आपको गाड़ी फ्री दूंगा, बस चार्ट को भी दे दो, कार्डनों को भी मिलती है कई चीज। ऐसा क्या है? वो तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन, ये मेरे से फ्री किताबें ले जाते हैं, वो क्या है? वैल्यू ऑफ बेनिफिट और पर्पस नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन। ना मैं एम्प्लॉय हूं ना आपका पार्टनर हूं, तो कैसे आएगा? एनी पर्सन सर, एनी पर्सन। चलिए चलिए, करना पड़ेगा, टीडीएस आपको ही करता है। चलिए चलिए, सब मजाक की बातें थोड़ी कर लेनी चाहिए। कहीं आगे आगे देखिए, आपको भी तो पब्लिशर से आई हुई है। चलिए चलिए, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। एक बात तो ये है, दो तरह के रिजीम में, चैरिटेबल ट्रस्ट में और रिलीजियस ट्रस्ट में। इसको एक रिजीम 1 कह दो जो सेक्शन 1023C लगता है, एक रिजीम 2 लग लो जिसको हम कहते हैं लेवल 12। दो रिजीम को ध्यान रखना। 1023C में 4 क्लॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं, सब क्लॉजेस। 1023C IV, 1023C V, 1023C सब क्लॉज VI, 1023C सब क्लॉज VIA। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, पहले बता दूं कि पहले एक होता है 3IAB, 3IAC, 3IAD, 3IAE, फिर आता है IV, V, VI, VIA। 3IAB तो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जिनकी इनकम माफ है। 3IAC था हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। 3IAD था कि एजुकेशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड, बोलो भाई साहब पुरानी बातें मत करा करो, 5 करोड़। 5 करोड़, तभी तो मैंने जान के बोला, गलती बोलो, 5 करोड़। हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। अब 5 करोड़। अब आया IV, सर्टेन नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नोटिफाइड, वो IV में आते हैं। उनकी इनकम टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। अप्रूवल याद रखना, अप्रूवल। और एक है B, सर्टेन नोटिफाइड रिलीजियस ट्रस्ट, उनको भी अप्रूवल लेनी पड़ती है। एक है VI, व्हाट इज VI? हॉस्पिटल, सॉरी, मेडिकल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस ग्रॉस रिसीट एक्सीड 5 करोड़, उनको भी अप्रूवल लेनी पड़ती है। एम आई राइट? और अगर हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स 5 करोड़। इन चारों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये 1023C में पहले तो अप्रूवल वहां लिखा था प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से लेनी है, अब उन्होंने क्लियर कर दिया अप्रूवल हैज टू बी टेकन फॉर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी वर्ड हटा दिया। अब देखिए ये ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है, ये पांच वाला कौन सा है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये ट्रस्ट के पास कोई टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च है, इसको एक डोनेशन मिला जो फॉर रिपेयर और रिनोवेशन ऑफ द टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क और चर्च के लिए, ये आपको मिल गया। वो तो 80G2 में लिखा हुआ है कि उसको वो डिडक्शन मिलेगी जो डिडक्शन देगा, लेकिन मुझे मिला है क्या, मैं एक ट्रस्ट हूं जिसके पास टेम्पल है, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च है और मुझे रिपेयर और रिनोवेशन के लिए पैसा मिला, तो कहता है इसको हम कॉर्पस डोनेशन मान लेंगे, इसको कॉर्पस डोनेशन मानेंगे प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कॉर्पस डोनेशन आप उसी काम के लिए यूज करोगे जिस काम के लिए दिए गई, और दिस कॉर्पस डोनेशन कैन नॉट बी गिवन एज डोनेशन टू सम और कंट्रीब्यूटेड टू सम अदर पर्सन, ये भी नहीं कर सकते। और ये कॉर्पस डोनेशन आप 11(5) में रखेंगे, ये कॉर्पस डोनेशन आप 11(5) में रखेंगे। तो ये कंडीशनें अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ही आपका ये कॉर्पस डोनेशन मान लिया जाएगा। और आपको पता जब कॉर्पस डोनेशन माना जाता है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर है? सिमिलर प्रोविजन 11 में बाय इंसर्टिंग एक्सप्लेनेशन 3 डाल दिया गया। सो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है, रिजीम 1, रिजीम 2।
टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च रिसीविंग any donation on account of renovation and repairs of the गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च, इनके लिए भी कॉर्पस है, इनके लिए भी कॉर्पस है, दोनों के लिए कॉर्पस माफ हो जाएगा। इसको डाला गया व्हाट यू कॉल बाय इंसर्टिंग एक्सप्लेनेशन 1A एंड 1B, इसको डाला गया एक्सप्लेनेशन 3। बोला गया अगर आप कॉर्पस डोनेशन को मिस यूज करोगे तो 1B में लिखा है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसी तरह 3 एक्सप्लेनेशन 3A में लिखा है अगर वो कॉर्पस डोनेशन आपने मिस यूज करी, ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करी, तो वो टैक्सेबल हो। ये क्लियर हो गया सर? अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्शन 11(2) में रवि जी जाते हैं और 11(2) में क्या होता है, इफ यू वांट टू एक्युमुलेट मोर देन 15% यू हैव टू फाइल ए फॉर्म। कौन सा फॉर्म है सर? हाँ, मैं टेस्ट ले रहा हूँ आपका। फॉर्म 10 फाइल करना पड़ता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। एम आई राइट? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। एंड जो भी पैसा आप एक्यूमुलेट करते हैं दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years and you have to tell the object for which you are going to accumulate and that money has to be kept in 11(5). ठीक है सर? 11(5) के मोड में रखना है। ये क्लियर है? ये 11 कौन सा सेक्शन कह रहा है? 11(2). 11(3) कहता है ceases to be remain invested, ceases to be accumulated, या आपने उसको मिसयूज, किसी को डोनेशन दे दिया, क्रेडिट कर दिया, या आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया 5 साल तक, तो क्या माना जाता है? छठे साल की इनकम। छोड़ दो, आगे 6 साल की नहीं मानी जाएगी, 5वें ही साल की मानी जाएगी। पहले तो ये याद रखना, मैंने जानकर इतना जोर से बोला कि पहले अगले साल की इनकम मानी जाती थी, 5 साल के बाद की। 5वें साल तक नहीं किया आपने और हमने उसको स्पेंड नहीं किया तो 6 ईयर की इनकम मानी जाएगी। अब वो उसी प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी जो 5th ईयर है, लास्ट ईयर। 5 साल तो मैक्सिमम है ना, वो मानी जाएगी। पहला पॉइंट ये है, वो 11(3) था। 11(3) ये है कि हम किसी कारण से उसको यूटिलाइज नहीं कर सके तो हम ये को अप्लाई कर सकते हैं कि दैट चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट कि इसको हम अलाउ करें। यही था सर 11(2), 11(3), 11। बिल्कुल ठीक है। यही प्रोविजन बाय इंसर्टिंग प्रोविजो 10 में ना, सॉरी, एक्सप्लेनेशन 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 एक्सप्लेन डाल के यही लिख दिया कि सुनो मेरे भाई कि 1023C में पहले 11(2) का सिस्टम ही नहीं था। ये वो कहते थे कोई फॉर्म वॉर्म फाइल नहीं करना, वो तो कहते थे बस एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड यू शुड कीप इट इन 11(5). अब क्लियर कर दिया 1023C में कि आप अगर 1023C में भी कवर्ड हैं तो जो 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट करोगे उसके लिए फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा, और वो भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले करना पड़ेगा। ये क्लियर है जी? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। और सेकेंडली उसको अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अंडर 11(5). ये बिल्कुल डिक्टो प्रोविजन रिजीम 1, रिजीम 2। और वो ही लिखा है कि अगर ये नहीं एक्यूमुलेट, अगर आपने खर्च कर दिया या डिसकंटिन्यू कर दिया या किसी और को डोनेट कर दिया या आपने 5 साल में खर्च नहीं किया तो क्या मानी जाती थी? इनकम 6 ईयर की। अब 6 की नहीं होगी। यहां पर भी वही पर बिल्कुल वही प्रोविजन 11(2), 3A, उसको एक्सप्लेनेशन 3, 4, 5 में। क्लियर है सर? उसको एक्सप्लेनेशन 3, 4, 5 में करना। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक सेक्शन 12A सब सेक्शन 1B है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इनकम चार्ज आपकी टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर 11 and 12 exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, you have to get your accounts audited and submit the report under form 10B. You know that. वो कहता था अकाउंट्स ऑडिट लिखा है, मेंटेन बुक्स का लिखा ही। अच्छा, अकाउंट ऑडिट करा लो, मेंटेन का कहीं लिखा ही नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, पहले तो 12(1AB) में चेंज कर दिया कि नाउ यू विल हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सच डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड, एंड सेकेंडली यू हैव टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड। सेम प्रोविजन 10th प्रोविजन में डाल दिया। पहले 1023C में था ही नहीं, 1023C में ये लॉ ही नहीं था। पहले 1023C में फॉर्म 10 भरना ही नहीं था, अब फॉर्म 1023 में भरना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, नहीं तो मिलेगा नहीं। अब ये कहा है अकाउंट्स बनाइए और रिपोर्ट भी फाइल करिए ऑडिट की। वो ऑडिट की रिपोर्ट 10BB में करते हैं, लेकिन वहां भी नहीं लिखा था अकाउंट्स बनाइए, तो वो भी 10 प्रोविजो उन्होंने डाल दिया है। ये ध्यान देखने वाली बात है कि ये प्रोविजो क्यों डालेंगे। ये फिर वो कहता है जी एक सेक्शन का प्रोविजो टू सेक्शन 143(3), उसमें लिखा था कि भाई 1023C की वजह से अगर वो लग रहा है कि ये मिसयूज हुआ है, इसके ऑब्जेक्ट जेन्युइन नहीं है या कोई कारण है तो एओ को एग्जेम्पशन नहीं देनी, तो एओ को कहता था यू आर ड्यूटी बाउंड टू रेफर दैट केस
to the person who has granted the discipline for withdrawal of that approval. ये था सर पहले, for withdrawal of development, क्योंकि आप वो exemption उसको देनी पड़ेगी जब तक withdrawal of approval नहीं होगी। ये सिर्फ अप्रूवल के लिए था, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं था। अब वहां पर भी ये प्रोविजन रजिस्ट्रेशन में भी डाल दिया कि अगर 1023 मतलब अगर प्रोवाइजो में लिख दिया कि अगर एओ आपको ये देना नहीं चाहता एग्जेम्पशन, तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने के लिए वो उसको लिखना पड़ेगा अथॉरिटी हु ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन कि ये ऑब्जेक्ट जेन्युइन नहीं है, या ये मिसयूज कर रहे हैं, या पर्पस फॉर विच इट वाज एस्टैब्लिश्ड दे आर नॉट यूजिंग इट, तो उस केस में वो वहां पर जाएगा और उसको कहेगा इनको रजिस्ट्रेशन विथड्रॉ करो। ये क्लियर हुआ सर? अब तीसरी बात और आई, जब वो रजिस्ट्रेशन विड्रॉ का काम आता था तो अब वो कहता 3 कारण से रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर सकता है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। एक तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आई जिससे लग रहा है, जैसे सेकेंडली ये जो प्रोवाइजो की वजह से किसने रेफर कर दिया, ईओ ने रेफर कर दिया कि भैया ये रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करो। थर्ड केस है कि आपको एक तुम्हारा केस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में सेलेक्ट हो गया। इन तीनों केस में वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए विल कॉल फॉर एक शो कॉज देगा, कॉल फॉर डॉक्यूमेंट करेगा, उसको स्टडी करेगा, फिर या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा या रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, या अप्रूवल कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। दोनों लेवल प्लेइंग प्रोविजन डाल दिए गए कि ये कॉल करके ऐसे ऐसे उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है और इन कारण से है। और लिमिटेशन 6 महीने ऑफ द क्वार्टर इन विच यू हैव डन, वो उसको ऑर्डर पास करना ही पड़ना है और उसको सेंड करना है, चाहे वो ऑर्डर रिफ्यूजिंग और ऑर्डर गिविंग कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन। ये भी एक पॉइंट था जो मैं बताना चाहता हूँ। बड़े पॉइंट कोई कुछ नहीं किया, जो चीजें 1023C में नहीं थी बट 1112 में थी वो चीजें इधर भी डाल दी, जो चीजें 1023 से में थी इधर नहीं थी वो बिल्कुल डाल दी। तो ऐसे प्रोविजन बना दिए कि लगता क्या है कि इनकम टैक्स ने क्या कर दिया है। 20 पेज है, इजी आउट। ये देखिए ईज नहीं है, अभी तो मैं आगे तो बोल ही रहा ईज की बातें कर रहे। अब ना सुनो, अगर आपने वो फंड यूटिलाइज कर दिए फॉर ए पर्सन रेफर टू इन 13(3), जो रिलेटिव आपका पर्सन रेफर टू 33, उस केस में क्या होता था 1023 से में लिखा नहीं था पूरा, अब दोनों में लिख दिया। अगर रेफर टू 33 में करेंगे तो क्या कर रहे हैं वो कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, और पेनल्टी कितनी है 100% if it is in the first time and 200% of the income if it is second or subsequent times। मतलब मैंने पैसा अगर आपने पर्सन रेफर टू 13(3) में कर दिया, अगर वो 13(2) ऑलरेडी है कि रीजनेबल अमाउंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 33 में कर दिया तो पेनल्टी लगेगी 271 AAE में 100% if it is first time of the amount of income applied for the benefit of a person referred to in 13(3), or 200% if it is for the applied for the benefit of person referred to in 43, it is a subsequent year or any other year। सर देख रहे हैं क्या क्या चीजें आई हैं। ये थी सर, ये वो जो मैंने आपको बताना था। बड़ी कंफ्यूजिंग होगी, आप मुझे गाली दे रहे होंगे पता नहीं क्या कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए मैंने ये सब बाद में लिखा था। टीडीएस रिफंड और वो फेसलेस भी है ना सर? सर क्या चीज टीडीएस रिफंड भी कुछ है? नहीं वो कुछ नहीं है। आपको और कोई चीज रह गई तो जरा बता दीजिए, मैं और कवर कर दूं। देखिए जो प्रोडक्शन 44B डाला था 144B, भाई साहब ने लास्ट ईयर ही किया था, उससे पहले तो उन्होंने एक वो डाल दिया था, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस डाला था। पहले ऑर्डिनेंस से आया, फिर 144B आया, अब 144B को भी सारा चेंज कर दिया। मैंने पढ़ा ही नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, छोटी मोटी चीज है। फेसलेस असेसमेंट अंडर 144B के जो सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 8 थे सारे के सारे बदल दिए और सेक्शन 9 सबसेक्शन 9 और 10 अबॉलिश कर दिए। तो प्लीज ये अपने आप पढ़ लेना, ये तो अभी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम अभी तो आया था 144। और ये भी कह दिया कि ट्राइब्यूनल भी फेसलेस होंगे, लेकिन 1 साल बढ़ा दिया, और उनकी अपील भी फेसलेस ही फाइल की जाएगी, और ट्राइब्यूनल का डिसीजन भी कभी हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए पीरियड 1 साल और बढ़ा दिया, वो भी कह दिया। सो अब हर, और इवन ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांसफर वो भी फेसलेस होगी सर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल वो भी फेसलेस होगा, वो डेट फिक्स कर दी है सर। सो इंतजार कीजिए, अपना फेस छुपा लीजिए, कुछ नहीं बचना, सब कुछ फेसलेस होना, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल 144C का हो,
या आपका ट्राइब्यूनल की अपील हो, फाइल करना और उसके बाद डिसीजन जो करेंगे वो भी आएगा, टाइम लगेगा, या आपका ट्रांसफर प्राइसिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फेसलेस। तो काम वाम बंद हो जाना है, ये ध्यान रखिए। तो ये भी मैं आपको 133 में अमेंडमेंट वो तो आपका फेस तो चलता रहेगा सर। चलिए सर, मैंने इतना ही बताना था। आपको कोई और क्वेरीज हो तो जरूर पूछ लीजिए। मैं थोड़ा सा आपसे माफी मांगूंगा कि मुझे नहीं पता मैं उस परफॉर्मेंस कर सका नहीं कर सका, क्योंकि मूड जब तक ठीक ना हो तब तक आपकी का दिमाग चलता नहीं है। मजाक कम किए, नहीं तो मजाक करते तो काफी चीज आती। गौरव जी कहते मेरा नाम तो लिया ही नहीं है, चलिए ले दिया गौरव जी का नाम। मनीष जी इतनी देर से चुप बैठे। मनीष जी इतने इतने सवाल करते थे मेरे को, पिछली बार किए इन्होंने, इस बार बहुत चुप बैठे क्योंकि उनका सर्च के सारे गड़बड़ हो गई है। मेरा भी नाम लिया। चलिए और बोलिए कोई है। सर, इन स्पाइट ऑफ द एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, आपने जिस बेखूबी से आपने ये सारा आज का लेक्चर दिया and explain the provisions, it is really commendable and we all appreciate it. A big round of applause. We have time for 2 or 3 short questions. अगर कोई पैनलिस्ट में या कोई व्यूअर्स में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड। रेज हैंड या व्हाट्सएप कर दें, इधर से भी प्लीज रेज योर हैंड। शिवम will facilitate that and you will be able to ask your question from Guruji. Any participant has any query? मुझे लगता है अभी कुछ समझने में टाइम लगेगा लोगों को। सर्वे प्रोविजन लिखा है, सर्वे प्रोविजन में कुछ भी नहीं, 130 वो थोड़ी ही चेंज किया ना। सर्वे में सिर्फ उन्होंने क्या किया, 133(5) को छोड़ दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया। 2A तो पहले वो अलग है कि भाई वो अगर तो वो सर्वे का केस में TDS का सर्वे है उसका तो उन्होंने छोड़ रखा है, लेकिन वो जो 5 वाला था उसको उन्होंने वापस लिया है। वो जो अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द, हाँ वो तो छोटी सी चीज है, ये क्या बताने, ये तो प्रोसीजरल मैटर है। खास बात नहीं। अब मुझे वो भी रटना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना सर। जरूरत नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड मे आई नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर Advocate K.G. Bansal Ji, who is the Vice President of the Delhi Tax Bar Association. If he is with us here today, if he is listening to me, Mr. Bansal, are you there? Yes. Thank you very much, Gupta Ji. Thank you very much. Haji. So I would request you to please propose a vote of thanks to our Honorable Speaker, Dr. Girish Ahuja Ji. Thank you very much, Gupta Ji. I am delighted to thank Dr. Girish Ahuja Ji. All of us are aware that he is one of the leading experts in the field of direct taxes and an outstanding speaker on direct taxes, especially income tax. Today, I am very thankful to him for having spared his valuable time and explaining the intricacies relating to the law of direct taxes in the Finance Bill 2022 in a clear and logical manner. Thanks once again, Dr. Girish Ahuja Ji. Thank you very much. Thank you very much. Khanna Ji, Advocate Nitika Khanna Ji, the Vice President of Sales Tax Bar Association, would also like to thank Dr. Girish Ahuja. May I request Nitika Khanna Ji, please. Thank you. Respected Dr. Girish Ahuja Ji, respected Sarvshri C.A. Atul Gupta Ji, former President ICAI Amarjit Chopra Ji, former President ICAI, and CA Dr. Ashok Batra Ji, Speaker of the today's session on Union Budget 2022 on direct and indirect taxes, other dignitaries present in this special webinar on Union Budget 2022. I, on my own behalf and on behalf of all participants of this session, convey profound thanks, utmost regards, and gratefulness to Dr. Girish Ahuja Ji for sparing his valuable time to enlighten us in this session as our illustrious speakers. He deliberated on the provisions enacted in Budget 2022. We all are lucky, fortunate, and blessed that we are part of first deliberation made by Dr. Tax Guru
learned and respected Dr. Girish Ahuja Ji on Budget 2022 provisions under income tax law. At the cost of repetition, I say that the Speaker of the Day is a legend of income tax and is known as tax guru to large number of tax professionals. He is an institution by himself of income tax law. One can request him to speak on a particular subject and he starts right away. I am confident that each one of the participants has understood the amendments being brought in clearly and lucidly. I, on behalf of all of us, convey thanks to him for teaching us this chapter. We are also thankful to CA Atul Gupta Ji, CA Amarjit Chopra Ji, CA Ashok Batra Ji for being with us to enlighten us in the following sessions. I am thankful to all dignitaries for making this session a great success. At the end, I thank each one of you who has joined to learn in this webinar and made it a grand success. Thank you all. Thank you. Thank you, Nikita Thank ji. you. Thank you. Dr. Girish Ahuja would now like to leave. He has to join another seminar, but we Sanjeev still Singhal. have with us two eminent speakers, CA Sanjeev Singhal Ji, who will be taking a brief session on sustainability issues in the budget. And then, of course, our very dear, very learned speaker on GST, Shri Ashok Batra Ji, will deliberate on the amendments in the GST law. So, Girish Ahuja Ji, thank you so much for being with us and thank you for deliberating with us. Now, may I now call upon Sanjeev Singhal Ji, Chartered Accountant, who's a Central Council member of the Institute of Chartered Accountants. For the second consecutive term, he has been elected to the council. I would request him to throw some light on the issues of sustainability, on the topic of bonds which were mentioned by the Finance Minister. Sanjeev Singhal Ji, please. Thank you very much, sir. Very good afternoon. Good morning. Abhi 11:58 mein, sir. Very good morning to you, and of course, a very good morning to Dr. Girish Ahuja and all the organizer of this program, past President Amarjit Chopra Ji, Atul Gupta Ji, Arun Ahuja Ji, the organizer of this program. And sir, thank you for giving me this opportunity once again in your program. Sir, I'm heading the Sustainability Reporting Standard Board of ICI. And given the push on sustainability, this budget has talked so much about sustainability that shows the intent of the government and the focus of the government on sustainability. I'll be very brief and try to finish it in 3 to 4 minutes, the various aspects relating to sustainability that have been talked about in the budget. This budget is focused on reforms towards building a sustainable economy. This budget has presented a long-term vision with some important announcements for taking the country on road of sustainable growth and meeting the Sustainable Development Goal 2030 agenda. जैसा कि सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हैं जो सारे कंट्रीज को 2030 तक अचीव करने हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस अपने प्लैनेट को एक लिवेबल प्लैनेट बना सकें. आज जिस तरह के कार्बन एमिशन है, इफ वी रीच द लेवल ऑफ 700 गीगा टन of the carbon emission, this planet will actually submerge into water. तो उसी सब के लिए अभी दावोस में जो 2020 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पंचामृत का प्रिंसिपल दिया, और वो सारे प्रिंसिपल्स हम ये देख रहे हैं कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर की कोशिश है कि हम इनको कैसे अचीव करें, और फाइनेंस मिनिस्टर भी उसी लाइन पे चल रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2030 तक हमें 45% कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है और 2070 तक हमें अपनी कंट्री को नेट जीरो कार्बन पे लेके जाना है, यानी कि हमारा कार्बन एमिशन ही नहीं होगा. एक होता है कार्बन न्यूट्रलिटी जिसमें हम ऑफसेट करते हैं अपने कार्बन एमिशन को, और नेट जीरो है कि हमारा नेट कार्बन एमिशन ही जीरो होगा. सो दिस बजट हैज टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर एक्सेलरेटिंग द सस्टेनेबिलिटी एजेंडा लाइक एनर्जी transition to climate action, clean and sustainable mobility, solar power, circular economy, digital university, transition to carbon neutral economy, and encouraging the sustainable and climate finance. Globally, जो व्यू emerge हो रहा है वो ये है कि climate neutral society की तरफ हमें बढ़ना होगा.
कोई ऑप्शन नहीं है हम सबके पास. इनफैक्ट 5 to 7% बायोमास पैलेट्स जो हैं will be co-fired in the thermal power plant, resulting in CO2 savings of 38 MMT annually. एनर्जी सेविंग आज एक सबसे इंपॉर्टेंट नीड है. और सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए जो इस बजट में प्रपोजल आया है कि गवर्नमेंट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लाएगी. सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में जो मेरा आइडिया है, जो मुझे लगता है कि लो कॉस्ट फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा उन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स को जो कि कार्बन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे इकोनॉमी में. जैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आते थे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता था, उसी तरह से इट इज पॉसिबल कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मे बी विदाउट इंटरेस्ट के ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनको उन कंपनीज को इन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिनका कार्बन एमिशन ज्यादा होगा. और इस पैसे का यूटिलाइजेशन उन प्रोजेक्ट्स में होगा जो कि कंट्री की कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे. बजट ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की भी बात की है जो डिजिटल इकोनॉमी को तो बूस्ट देगा ही देगा, साथ ही साथ कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेगा. बजट हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट डिजिटल यूनिवर्सिटी बिकॉज द फ्यूचर लाइज इन डिजिटल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी. अभी हमने जो इवन इंस्टीट्यूट ने जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी वो भी हमारी डिजिटल और सस्टेनेबल इकोनॉमी पर ही थी. सो बजट के अंदर एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का भी आया है जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी जो है वेयर द बैटरी विल बी यूज्ड और एनर्जी यूज बी यूज्ड एज अ सर्विस rather than a product. Budget has also mentioned sunrise opportunity, which includes green energy and clean mobility system as having immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. Solar power पे बहुत फोकस है. हमारा जो एम्बिशन है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट किया है कि 2030 तक हम 200 गीगावाट जो है एनर्जी वो सोलर एनर्जी को यूज करें, which is a very big step. As institute, we welcome all these strategic initiatives introduced by Budget 2022 for taking forward country's progress and transitioning to low carbon economy. The Sustainability Reporting Standard Board of ICI has taken initiative in sustainability domain for strengthening the sustainable reporting of the corporates, developing technical literature, capacity building, partnering with regulatory bodies, and also creating awareness on sustainable development goal. आपके ICAI ने एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैच्योरिटी मॉडल निकाला है वर्जन 1.0 जो कि वर्ल्ड में ऐसा पहला सच मॉडल है और ये अगले साल से टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो मैंडेटरी हो रही है वो दे विल बी एबल टू यूज दिस मॉडल. इसके अलावा इस साल से हमने सस्टेनेबिलिटी अवार्ड स्टार्ट किए हैं जो कि 9 फरवरी को दिए जाएंगे उन कंपनीज को एनकरेज करने के लिए जिनकी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं. हमने सस्टेनेबिलिटी लिटरेसी ड्राइव शुरू किया है. हमने चैंपियंस आइडेंटिफाई किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए और सीएस के ऑफिसेज में कैसे कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करें इसके लिए हमने एक कंपटीशन किया. हमें काफी अच्छे सजेशंस आए और हमने उन सीए फर्म्स को जिन्होंने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया उनको हमने सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिए. तो आईसीआई का जो विजन है वो गवर्नमेंट के विजन के साथ है एंड वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द नीति आयोग ऑन डेवलपिंग द reporting matrices for sustainable development goal for the private sector, and we are also working with the Security Exchange Board of India on the concept of social stock exchange. तो जो हमें लगता है कि going forward the main focus will be to help businesses in integrating sustainability in both the business practices and reporting and thus truly harness the power of non-financial reporting for both environmental and societal cause. एंड फ्यूचर में हमें लगता है इवन जो टैक्स इंसेंटिव्स होंगे वो भी ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड होंगे, सस्टेनेबिलिटी पर बेस्ड होंगे और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है दैट विल एक्चुअली बी रिप्लेस्ड बाय द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. जो हमारी एक ही रिपोर्ट होगी, एक ही हमारे स्टेटमेंट्स होंगे, उसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे और उसी में सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी होगी. सो फ्यूचर लाइज इन सस्टेनेबिलिटी और इसके बिना हम में से कोई एग्जिस्ट भी नहीं करेगा. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एज Chairman of Sustainability Reporting Standard Board, we are thankful to the Honorable Finance Minister for giving such focus on the Sustainable Development Goal agenda. And thank you once again, sir, for giving us this opportunity to talk about sustainability in a program which is largely a show, mega show by Dr. Girish Ahuja, as was mentioned by Madanji, first day, first show. Thank you so much, sir. Thank you, Sanjeev. Thank you for giving us an insight into the sustainability issue. Thank you so much. And I think your talk will be enlightening, mainly to chartered accountants and to industrialists also. It shows a way forward as to what will be the future of India.
Thank you, Sir Sanjeev Singhal Ji. Friends, now we are eagerly waiting to hear Ashok Batra Ji. Ashok Batra Ji again requires no introduction. He has been with us for so many years, and he is a very well-known speaker on indirect taxes, especially on GST. He is an author of very well-read books on GST also. GST now, as we all know, has started gaining much more importance even than direct taxes. The finance minister in her speech referred to the collections of January last month, and she said that the collections have grown more than 140 lakh crores. So that is a very significant contribution from the GST. And I think to dwell upon the subject of GST, the amendments, etc., which are proposed, there'd be no better person than Ashok Batra Ji. Sir, we are now eagerly waiting to hear from you, and we have sufficient time today, and we will be pleased to hear all your views on the amendments in the GST. Thank you, sir. Please welcome, sir. Thank you, Ravi Ji, for providing me this opportunity. I am grateful to Tax Law Education Society and other associations who are organizing this program. So far as time is concerned, I was also thinking now, because it's a virtual program, there is no system you can give me a slip. So it is better you tell me beforehand how much is the time. You have already given the indication, sir. Thank you very much. That you have to join the program of the NRIC also. Dr. Girish Ahuja Ji has already joined that program. You'll also be joining. But I think you have at least 25 to 30 minutes with us. Sure. And whatever time you think, sir, we are eagerly waiting to listen to you. Thank you, sir. If you look at this finance bill, then the department has accepted that the revenue is going up. But the reason for this buoyancy in revenue is due to strong enforcement, or it is due to inflation, or there is really a growth in the economy that need to be analyzed. This is the only opportunity for the government to introduce statutory provision, because the GST Council may have power to recommend, but the opportunity to recommend to change the statutory provision only comes in this finance bill. Looking at the finance bill, I had certain disappointment. I was thinking perhaps the government will come out with a roadmap to GST tribunal, because non-functioning of the tribunal is causing a lot more problem to the small and medium enterprises. Everybody cannot afford to go to the High Court. And even the bureaucrats are taking advantage that there is no tribunal. So they are not adjudicating or doing the things, because they say you have no option to go to the tribunal, so let us take our time. Second was, there have been certain anomalies which has been pointed out to the government. And those anomalies I have also gone through, which has been referred by various chambers, various professional bodies, but I could see only few of those are being addressed. The government has accepted that the system of GST 1, 2, and 3 is not likely to be implemented. And finally, they have dropped the idea of two-way communication between the supplier and the recipient, as a consequences of which section 42, 43, 43 capital A are being omitted. Section 41 and section 31 is totally substituted fully. The provisions with regard to availment of input tax credit has been stringent, not only by amending section 16, but if you read section 38 and 41, they also deal with the tax credit only. And there is an increased compliance, because a lot of changes have been made in section 37, 39, which will be dealing in detail when I'll come to clause-wise discussion. And another interesting feature is, everywhere they have stated with regard to conditions and restrictions. So conditions were not sufficient, so they have taken the power that they can impose the restrictions by way of rule. So they are amending the statutory provisions in such a manner that there is no need for change in the amendment of the section. It is not like that. There are only shortcomings in this finance bill.
if you look at the positive sides, so there are certain positive sides also. For example, they have given additional time of 40 days in order to rectify your mistake. Either it is section 37, 39, 34, or availment of credit under section 16, or for that matter, even 52 also, the extended time limit is being given. The government has amended section 50, proposed to be amended section 50 with retrospective effect from 1st July 2017, wherein they intend to substitute subsection 3 of section 50. The interest will be leviable only when the ITC is availed and utilized, not or. So meaning thereby, if you are availed the credit but not utilize it, interest will not be there. The interest rate under subsection 3 of section 50 has also been reduced to 18%. And if you look at certain exemptions, then 2 exemptions are being given retrospectively, which will certainly reduce the litigation, particularly with regard to the license fees, which has been charged by the state government on granting the license of alcoholic liquor for human consumption. So with this background, I'll proceed to various changes which have been proposed in various sections. Coming to the clauses, so far as GST is concerned, there are clauses 99 to 123. In total, there are 25 clauses which deals with this subject. But if you look at it minutely, then you will appreciate that clauses from 117 to 123, which are 6, are replica because those changes have been proposed in IGST to exemption and reduction in the rate of interest and UTGST also. So practically, there are 19 clauses which deal with the CGST subject. Now, starting with the clause 99, the first clause, which intend to amend section 16. And we all know this is the section which is the eligibility for availing the tax credit, which is very, very important. So we have seen that there have been an amendment in the previous finance bill, which has been notified only from 1st January 2022, 16(2) AA, wherein in order to claim the credit, the 5th condition was being imposed, that that credit has to be posted by the supplier in his GSTR 1, and it must come and reported in GSTR 2B. Now they have come out with another condition, BA, in the same section. In that section, they intend to propose that you shall not be eligible to credit in case that credit is being barred under section 38. Now you'll say, what is this section 38? Let me delete it here briefly. 38. I'm just taking a pause for a second. हाँ जी, सर आप म्यूट हो। बत्रा सर आप म्यूट पे चले गए हैं शायद। Sorry. So I am joining another program on the another computer, but I am available here only. Yes. सर थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा। Yes. I was discussing section 16, and I was saying there's another condition which is being inserted, section 62, section 16, subsection 2, clause BA. Now, as per this clause, they say you will not be eligible to claim the credit if that credit being restricted under section 38. Now, what is this section 38? If you look at section 38, it was talking about return of inward supplies, which has never become effective. That section was never came into force, but now it is being substituted with the new section, wherein in subsection 2, there have been 6 restrictions which has been imposed on the person for the claim of credit. I'll deal in those 6 conditions only when I come to section 38. But right now, what I'm trying to say is, if this is an additional, then there's an advantage that they have stated you can claim the credit, and that 40 days advantage is being given in 16(4) also. That means
in case you have forgot to claim any credit, earlier on you were supposed to claim by the due date of filing the return for the month of September or annual return, whichever is earlier. Now the due date of filing the return for the month of September is being substituted by 30th November. So practically 20th October was the due date. So we were having a time up to 20th October. Now we had a time in not only 20th October, but up to 30th November. So additional 40 days time is being given. As I told you, I may be not repeating it time again because that has been given in section 34 also. And that has been given in section 37 also, 39 also, and 52 also. Then friends, I'm coming to the second amendment which is being proposed. That is being proposed in section 29, which deal with cancellation of registration. It is very disappointing that the government is not looking at and relying on the businessman. Now they have said that this registration number can be cancelled by the proper officer in two situations. Earlier on, it was when the return has been submitted by the composition dealer for 3 consecutive periods. Now it is being substituted in case he fails to file the return 3 months beyond the due date of filing the annual return. We all know now the annual return is to be filed and due date is 30th April. So in case any composition dealer does not file the return on June by 3 months, means May, June and July, by 31st July, then the registration number can be cancelled. Similarly, as I told you, the government is taking power to prescribe certain conditions in rules. They say earlier on, any other dealer other than composition dealer, if he does not file his return consecutively for 6 months, his RC was liable to be registered. Now they say 6 months or any period which may be prescribed by the union. So that means now it is the government can prescribe without amending the section even 2 periods or 3 months period or 3 tax periods, your registration can be cancelled. So this is another amendment which is being proposed in section 29. Then after section 29, we can go to straight section 37. Section 37 deals with, we all know, filing of outward supplies, GSTR 1, which we know it very popularly. So GSTR 1 में पहले तो उन्होंने 1 और 2 में 2 कंडीशंस लगा दी. ये कहा कि जो क्रेडिट है that will be communicated in to be subject to such restrictions and conditions. Similarly, it will be communicated to the recipient also subject to certain conditions and restrictions. चलिए कोई बात नहीं. You have taken the power. Now you can always say, and ultimately once these provisions may be challenged in the court being unreasonable or otherwise, so the government can say it has got a statutory support and we can always put that kind of a conditions. Secondly, they said in case you are not filing any return for any tax period, then you cannot subsequently file your GSTR 1. That is why I was referring in my initial comment that compliance is of the rise. Now everybody need to file GSTR 1 and that too consequently, meaning thereby अगर आपने पुराने किसी महीने का GSTR 1 नहीं फाइल किया तो आप अगले महीने का GSTR 1 नहीं फाइल करेंगे. तो GSTR 1 has become the basis for the government. और उसी जो इंफॉर्मेशन GSTR 1 में आएगी वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी इलेक्ट्रॉनिकली, जो उन्होंने 38 में भी कहा. तो जो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट होगी उसके बाद भी अगर कम्युनिकेशन के बाद भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी वो एक अलग बात है, बट कम्युनिकेशन इज आल्सो देयर, दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू कंडीशंस. तो उन्होंने एक मैकेनिज्म बना दिया कि उन्होंने भारतीय एयरटेल की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी नलिफाई कर दिया और ये कह दिया कि नाउ rather than doing a two-way communication, it has become a courtroom. Everybody has to address to the chair. Supplier will give information to the department and department in turn will pass on that information to the recipient and he can put further conditions also. So I don't know whether businessman is responsible for all these amendments because there have been fake invoicing issues, and I was reading some of the statement given by the ministry that the amount involved is something like 93,000 crores. If that being so, the government has to take these kind of actions. I really fail to understand. They have to strike out a balance between the honest taxpayer
who is unnecessarily being put under pressure. And the whole theme of this GST was seamless credit, and the credit and this returns and compliances are on the rise. That is the point which we need to understand. So 37(1) में एक उन्होंने ये कह दिया, दूसरा 40 दिन का टाइम दे दिया, जो मैंने आप बार बार कहा है 30 नवंबर तक का। तीसरा ये कह दिया कि आपको सारे रिटर्न फाइल करनी है, and then came section 38. This is the new section which is being substituted, जिसका हेडिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। जो पुराना सेक्शन 38 था उसका हेडिंग था इंफॉर्मेशन ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। यहाँ इनवर्ड सप्लाईज कहाँ है? यहाँ तो एक मैकेनिज्म है where they will get the information from the GSTR1 and communicate the same to the recipient. They have not mentioned 2B, but it will be something like that in which that information will come. In fact, it is 2B only according to my understanding, but they have not mentioned form 2B. This I am clarifying. So that information will come to that. And that is not sufficient enough. They say you have to satisfy conditions 16(2). Invoice हो, supply आई हो, supplier ने टैक्स दिया हो और आपने रिटर्न फाइल की हो। उसके अलावा उन्होंने सब सेक्शन 2 में ये कह दिया कि we will say कि this is the amount which is available and this is the amount which is not available. और not available के लिए उन्होंने 6 सिचुएशन एनालाइज की हैं। पहली सिचुएशन उन्होंने कहा है where any registered person has taken the registration, within such period he cannot claim the credit. The language is not clear what exactly they want to say. By any registered person within such period of taking registration as may be prescribed. So new registration, either is supplier or the recipient has been barred from taking credit, and they can notify any of those conditions. Second condition, which is already there in section 2C, has been restated in section 38, that the tax must have been paid by the supplier. Third condition is where there is a difference between GSTR1 and 3B of the supplier by a specified percentage. Even in that case also recipient can be denied the credit. And the fourth condition is, in case they have put up any condition with regard to the period of registration, you cannot claim the credit, you claim that credit, your whole credit can be blocked. And fifth condition is 49(12). This is a new amendment which is being proposed. And in this amendment, they are saying कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसको कैसे यूटिलाइज करना है हम बताएंगे। 99% करना है, 98 करना है, 97 करना है, या कोई और रिस्ट्रिक्शन लगानी है। अभी 86B में 99% कहा तो सरकार को ये था कि perhaps this provision may be challenged because it does not have any statutory support. Now by proposing this, they are giving a statutory backing to rule 86B also. So this is what it is there in section 38. Now comes 39, which is certainly we all understand, filing of return. Filing of return, non-resident taxable person who was supposed to file the return by 20th of the following month. Now that limit, that time period has been reduced to 13th. And thereafter, they are saying, so far as return is concerned, you can pay the self-assessed tax or any amount as may be prescribed. I am sure, because we were also debating in our office what is the purpose of this amendment. And then I realized because there is already a scheme which we all know, quarterly return and monthly payment scheme. In this scheme, I am liable to pay 35% of the tax amount, which is an amount which is not a self-assessed. Perhaps that scheme was in operation, but does not have any statutory backing. So this amendment is being made, wherein they can justify that even if you pay a specified amount, that can be paid therein. And now they have put up another condition in this. You cannot file your 3B in case you have not submitted the GSTR1 for the previous month. So that means filing of GSTR1 is now most important, without which you cannot be eligible to file your 3B. And we all know in case we don't file our 3B, my e-way bill can be blocked, my RC can be cancelled. So this is really important. And now filing and compliance of GSTR1 and 3B is very, very important. Then comes an amendment in section 47, not a major one. Earlier on, they forgot to file late fee on the TCS returns. And that TCS return was only subject to penalty under section 125 general clause.
But now they are saying that you are liable to pay the late fee, which is applicable to GST 1 and 3B, and that has been made applicable to 47 also. Then 48, there is a technical correction. This section deals with the GST practitioner. Certainly, the reference of section 43 has been deleted, so nothing important. Then comes section 50. This is really a section 49, payment of tax. Here we have seen a lot more changes, some in favor of the SSC. First of all, they are saying that now we can prescribe condition for utilization of electronic credit ledger by inserting subsection 4, and then 14 and 12 also providing that how it can be used. So these are detrimental ones, but the advantage or the beneficial proposed amendment is that in the case of balance in your cash ledger, you can shift the head from one head to another one. Tax, fees, penalty can be shifted to integrated tax or central tax. Similarly, another main advantage is being given, which was not there in earlier proposition, and this amendment proposed that in case you are having two different registration number under the same PAN, and in one registration number, there is an excess balance in cash ledger. So you can transfer that balance into CGST or IGST credit of your other registration under the same PAN. It will really help number of the assessors in resolving their cash flow problem, because sometimes they deposit the cash in one office, in one registration, whereas there is a demand in another one. So this is one very, very beneficial amendment. Then comes section 50. Again, this is beneficial amendment. There are two amendments which are being made, and we need to understand subsection 3 of section 50 is being substituted. Now, as per this new section, you are liable to pay the interest when you have availed the credit and utilized it. Merely availment without utilization will not attract the interest liability at all. There have been number of case laws on this. Some are in favor, some are in against. So this was a subject matter of litigation. With this proposed amendment, I think the department has already initiated number of show cause notices. Couple of them we are also dealing with them. So this is a very, very important amendment which has come, which is in the favor of assessing. And secondly, with retrospective effect, they have said you're liable to pay tax at the rate of 18% if you have wrongly availed or wrongly availed the credit. Now the question is, those who have paid 24% interest, or they will be eligible for the refund, or it can be appropriated. Now, if this amendment has come from 1st July 2017, it is 4.5 years which has already been passed, and some of the supplier must have paid tax at the rate of 24%. They have done certain retrospective exemption, but there they have specifically stated no refund shall be allowed. But in this case, they have not stated. So in my humble opinion, in case we are complying with the condition of section 54 and the time limit is there, maybe in case we have paid 24% of interest, we can certainly go and claim refund for the excess amount which you have paid. That is the difference between 24 and 18%. And then second amendment, as I told you, the rate of interest have been reduced from 24 to 18%. Now the amendment which has been made lastly in the statutory provision is section 54, which deals with the refund. Subsection 1, they have very clearly stated that you can claim the refund of cash ledger. Earlier on, the word was in such manner in filing return, so there was no column. Now they add the word form. So I think they'll prescribe a form wherein you can claim the credit. Then in the case of diplomatic missions and international organizations as provided under International Immunity Act, they were eligible to claim the refund within 6 months. Now they have clarified it's not 6 months, 2 months from the quarter in which the supply has been received. Third, there was no relevant date from where the 2-year period is to be calculated in the case of SCZ unit and developer. So they have made it clear if this is the due date of filing of return. They have prescribed what is the relevant date when the refund is for the supply made to SCZ or the ITC in relation to the SCZ. So these are beneficial provisions,
But one, there is a blockage of refund under subsection 10 of section 54, and it used to refer to 54.3. 54.3 deals with the subject of refund of ITC. But now this reference is being deleted, so he can block your credit. He can block your credit in case there is some demand, either 54.1 or 54.3. Now, because it is subject to whole section 54, so here the scope has gone. I think I forgot to mention section 41. That section is being substituted. As I told you, the concept of 1 to 3 is gone. So the provisional acceptance of ITC is also gone. Now they have substituted this with a new section, which says you can claim the credit, whatever amount has been transferred in your 2B. And secondly, they have stated, in case the supplier has not paid the tax, the provision which you are saying, and it has already been challenged in various high courts by the supplier, the tax has not been paid. They have reiterated you will not get the credit. But yes, they have further stated in the proviso that once the supplier made payment of tax, then you will be eligible to claim the credit. Perhaps the rigorous has been reduced just to convince to the court it is a reasonable one, and we are not denying the credit. Like in the case of 180 days, when this provision being challenged, the court have held in favor of the revenue by stating that once you make the payment, you can claim the credit. And then 16.4 limit is also not applicable. So अगर मैंने 180 दिन में नहीं किया, मैं 2 साल बाद करता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे मिल जाएगा. So similar condition they are proposed in section 41 also, by saying कि आपको credit दे देंगे provided it makes the payment of tax to the government. I think this is being done to defend their case in the court when this 16.2C provision will be challenged. I think the government has taken a technical move to prove their case. Then there have been 2 retrospective amendments. A notification came in January 2018 stating that common GST portal, that is www.gst.gov.in is our portal. But then they don't realize the act came into force from 1st July. But certain provisions like transitional provisions were applicable from 22nd of June. So from 22nd of June, GST portal has been made as their formal portal, and they have rectified that mistake which has come. And then 2 exemptions have been given retrospectively, very affecting very few professionals. Number 1, there is unintended waste in the manufacturing of fish meal, except fish oil. Agar fish oil निकलेगा तो उस पे आपको tax देना है, बाकी उस पे नहीं देना. But then this exemption is only for the period 1st July 2017 to 30th September. Similarly, another amendment has been made by the government, wherein you are paying a license fee for alcoholic liquor for human consumption. The government has been giving the licenses and people have been paying tax, and the department is asking GST liability under reverse charge. So now that amendment is being proposed that this exemption shall be available from 1st July 2017. So that means all the show cause notice which has already been issued, once it gets an enactment and the section is being notified, from that date that litigation will be over. With this, because I have been given only 25 minutes, I think I have concluded my quota of the time, and I don't want to take even a single minute more. So over to Ravi ji. Thank you. Thank you so much, Ashok ji. And I think your deliberations were par excellence. Even a person like me who does not know much about GST could understand the concepts that you have mentioned. And I think all the listeners, all the participants of the seminar would have gained immensely. In the time allotted to you, you have done a wonderful job. Thank you, Ashok ji. Thank you so much. Friends, before I conclude the program, I would like to acknowledge the presence of Advocate Sanjay Sharma ji. Sanjay ji, are you with us? Yes, I can see Sanjay ji. Sanjay ji, any questions, any queries that you have for Mr. Ashok Batra? Any remarks? Yes, sir. He had been Hare Krishna to all, and it's a wonderful program going on. Despite odd with Mr. Ahuja Saab, he has deliberated extremely well, and similarly on the same pattern, Mr. Ashok Batra has taken the baton and delivered his address on indirect taxes
especially GST. He's also a master of GST, and I would say the address he gave was absolutely clear and easy to understand. Baki, let the things move on. The government coming out with this provision of extending the date by 40 days, though it's not that good enough, but still, at least I would say it's a small bit has come from the government side, a small reprieve to the taxpayers. And it's a pleasure and it's a for me to be with Mr. Ashok Batra Ji. He is a member of our esteemed Sales Tax Bar Association as well as of AFTP. It's always pleasure listening to him. We have been listening to him from last around 20 years, and I've been following him from G19 days. And he's a wonderful speaker and making a tie-up with Dr. Girish Ahuja Ji, and he's also a master of. So I would like to read a small share for him, if you permit me. Then Please, please. सर, शोहरत मिली है इनको यहाँ अपने काम से, दुनिया में हर कोई इन्हें कहता है, अशोक कहता है, सारा चमन महकता है बस इनके नाम से, संसार में महकता हुआ ये शिरीष है. शिरीष मतलब फ्लावर. सर, अशोक बत्रा जी भी is a top in the country, I would say, as far as GST is concerned, and Shat Naman inko bhi, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Sanjay Ji. Before we conclude, I would like to acknowledge the presence in the program of Shri Sandeep Khaturia Ji, who happens also to be the treasurer of the society, Advocate D.K. Gandhi Ji, who is the national president of the AIFTP. He could not join earlier, but I think he was with us throughout the program. Senior Chartered Accountants, CA Praveen Bhatia Ji, CA Vinay Sethi Ji, CA Arun Gupta Ji, CA Rajesh Jain, CA Manish Garg Ji. All of them have been with us throughout the program. Gaurav Rakecha Ji is here with me. And I once again wish to place on record my sincere thanks to Shivam Ahuja for the excellent coordination of the technical support, because of which we could run this program today. In fact, I would like to share with you that today there were 4 programs going on from this office, and Shivam was coordinated all of them. Voice of CA had a separate program also. The NRIC is also conducting a program where the chairman CBDT has also joined. Revenue Secretary is also joining there. That program is also being coordinated from this office. So I think it is a great achievement. And again, a very big thank you to all the participants. Thank you, and looking forward to meeting you again on another webinar. Thank you. Thank you, friends.